नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को, सभी देखने वालों को, सभी चाहने वालों को और ना चाहने वालों को भी जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ईयर 2023 बिल्कुल समापन की ओर है, संपन्नता की ओर है। चलो समापन की ओर नहीं है, संपन्नता की ओर है। तो 2023 विल बी रिमेंबर्ड फॉर द ग्रेट विक्ट्री ऑफ द बीजेपी in all the three states, and the fact that Congress is still not finished. Congress is still fighting back. For me, I think one of the biggest events of this year was the Bharat Jodo Yatra of Rahul Gandhi and the fact that the Congress actually was able to win Telangana. क्या है कि जब बीजेपी जीतती है तो इतना सरप्राइज नहीं होता है, हैरानगी नहीं होती लोगों को कि भाई जीतना ही है। But when the Congress wins, I think that's a major event. What do you think? Now both have been working hard. ऐसा नहीं कि कांग्रेस, you saw Rahul Gandhi working like never before. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितने मीटिंग्स ये 3-4 स्टेट में उन्होंने किए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस, इट वाज अनबिलीवेबल। पहले भी वी डिडंट सी सच इतना मेहनत राहुल गांधी जी का हमने इस वर्ष जो किया, चाहे वो जोड़ो यात्रा के था, जोड़ो यात्रा में उन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो स्टेट असेंबलीज में किए, देश के बाहर जाके हार्वर्ड में किए, अलग अलग जगह पे जो राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम और अपने प्रोग्राम्स के तहत हार्ड वर्क किए, उसको हम लोग जुटला नहीं सकते, वी कैन नजरअंदाज नहीं कर सकते। ही हैज वर्कड हार्ड, बट यू गॉट अ टफ नट इन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी कोई उतना ही मेहनत है या उससे ज्यादा मेहनत, 24 घंटा जैसे करना कि इतना मेहनत करना, फिर एक और जोड़ी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, द बिग 3, और जो लगातार इनके संघर्ष रहा है, इन्होंने भी कोई मौका छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट हर मौका इन्होंने किया। तो एक भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा साल था कि वी फॉर द ऑपोजिशन भी बहुत जबरदस्त काम किया और रूलिंग पार्टी बीजेपी एंड अलाइज डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सो यू कांट डिस्क्रेडिट एनीबॉडी दिस ईयर, बोथ हैव गिवन स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस। Fantastic. And as far as the Congress is concerned, I believe there's been a change in Congress strategy in terms of exactly how to go about whatever. I have been told, now we'll ask Mr. Bharat Singh ji of the Congress is with us right now. We'll ask him whether or not it's true or whether or not he has heard about it. The leadership in the Congress has decided कि जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, भाई हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं या नहीं, ये आपको तय करना है। That's what the India Alliance has decided. That's what the Congress has decided, which is why 14 जनवरी को न्याय यात्रा शुरू होने वाली है राहुल गांधी जी की, and I support that. By God, I think the Congress should get its confidence right back. Very frankly speaking and truthfully speaking, प्रदीप जी, कांग्रेस आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है साहब। पैन इंडिया पार्टी है। इनफैक्ट इट इज अ पैन इंडिया पार्टी इवन मोर देन द बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की 2 सरकारें दक्षिण में हैं और एक सरकार उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, और 2 जो हैं वो तेलंगाना और कर्नाटक में है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार दक्षिण में नहीं है। सो इफेक्टिवली कांग्रेस इज द ओनली पैन इंडिया पार्टी। लेट्स गो अक्रॉस टू भरत सिंह जी। भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार राजू भाई। नमस्कार नामबियार जी। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? फाइन सर, बढ़िया हूँ। अच्छा और बढ़िया। अच्छा, ये आपने क्या अपनी ये ऐसे मुंह के ऊपर हाथ लगाया यूं करके, क्या दिखाना चाह रहे थे सर आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर जो भी है, लेकिन उस दिन हम लोगों ने देखा राहुल गांधी जी को कसरत करते हुए पहलवानों के साथ। अरे यार क्या फिजिकल फिटनेस है, बाप रे बाप। वो बजरंग पुनिया के साथ में जो पहलवान थे वो बोल रहे थे कि हम लोग ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे, कुछ लाइट सी एक्सरसाइज करेंगे, इधर उधर हाथ हिलाएंगे, चले जाएंगे। कहते ये तो यार हमसे भी ज्यादा टफ एक्सरसाइज करते हैं। Absolutely fantastic. वो jiu-jitsu के, maybe people don't know, he is a jiu-jitsu black belt of the 13th degree, Mr. Rahul Gandhi, by the way. और अगर अपने पे आ जाएं, बड़े से बड़े पहलवान को भी चित कर सकते हैं। And I'm not joking, by the way. ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि I'm a fan of Rahul Gandhi or something like that. It is the truth. और सबसे मेरे लिए भरत सिंह जी, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप कमेंट करें। मेरे लिए जो सबसे प्रशंसनीय बात है
राहुल गांधी जी ने कभी भी अपने बारे में डींगे नहीं हाकी हैं। ही हैज नेवर बोस्टेड अबाउट हिमसेल्फ। अपने बारे में उन्होंने कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करी है कि मैं जब यहां था या मैं जब यहां था या मैंने जब ये किया। ये मतलब इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, कहने की हद नहीं। लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ द मैन, अमेजिंग। भरत सिंह जी आप बताएं। देखिए, राहुल जी के बारे में पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं है। ये बता दूं कि वो मार्शल आर्ट के एक अच्छे खिलाड़ी हैं जी। कुंफू, जूडो, कराटे, सब ब्लैक बेल्ट हैं। और इसी वजह से जो है उनकी फिटनेस, और मुझे लगता है कि दिन में करीब 2 घंटा डेली वो एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं। और यही वजह थी कि मुझे लगता है कि 4,500 किलोमीटर से ज्यादा चल पाना संभव हो चुका, तो इसकी वजह से हुआ। और देश की जनता का भी बहुत बड़ा प्यार था उसके अंदर, आशीर्वाद था कि वो हिम्मत बढ़ते गई और हम जो है यात्रा आगे करते गए। और बहुत जल्दी जो है 14 तारीख को हमारा न्याय यात्रा शुरू हो रहा है जी। और उस न्याय यात्रा के माध्यम से करीब 6,200 किलोमीटर हम जो है पूरे देश में समझिए अभी एक तरह से उत्तर से लेके महाराष्ट्र तक हम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दक्षिण से लेके करीब हम तो दिल्ली तक तो गए ही थे। अब हम so it will be north east to south west effectively, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक। और एक बात रही कि आपने अखाड़े की बात की, राहुल जी की फिटनेस और अखाड़े में किस तरह से वो कुश्ती के दांव दिखाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय उनके मुकाबले में कोई अखाड़े में खड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर कोई अखाड़े में आ भी गया तो उनको जो है वो धोबिया पछाड़, जो शायद मुझे लगता है बजरंग पुनिया जी भी ने कहा था कि अच्छे भी इस समय धोबिया पछाड़ राहुल जी उसको मार सकते हैं। तो अगर किसी को आजमाना हो तो अखाड़े में आ जाए। कांग्रेस पार्टी तैयार है 2024 के अखाड़े के लिए, और किसको कौन सा धोबिया पछाड़ मारना है हम लोग मारेंगे। और मणिपुर की जो सिलेक्शन की गई वो भी बहुत जबरदस्त है अगर देखा जाए तो। और आज भी मैं मानता हूं, आज मतलब न्यू ईयर एक दिन के बाद है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साहब, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मतलब अंदर झंझोर देने वाली चीज है ये, कि आज भी भरत सिंह जी, प्रदीप जी, कि आज भी मणिपुर की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इट इज स्टिल नॉट नॉर्मल। ये क्या है यार? मतलब भरत सिंह जी, आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। ये मई से शुरू हुआ मामला है, मई से। ऑलमोस्ट इट्स बीन 7 months। भरत सिंह जी, देखिए राजीव भाई, देश की जो इस समय सरकार चल रही है, जो चला रहे हैं, वो खुद उसको संभालना नहीं चाहते। अगर वो संभालना चाहते, जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, उनको ऐसा फील होता होगा कि शायद मणिपुर इस देश में नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में ही मणिपुर है। आपको सब जगह जाने के लिए समय है राजू भाई, लेकिन मणिपुर का अभी तक आपने दौरा एक बार भी ऐसा नहीं कि जाके वहां के जनता के बीच में जाऊं, उनको मरहम लगाऊं। जो इतने घात, आघात और घाव ये तीनों आपने दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीनों इन्होंने दिया है। अगर ये चाहते पहले दिन से, तो आज जो मणिपुर जला है और जो जल रहा है, तो आज वो नौबत नहीं आती। मगर देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के कुछ नेता नहीं चाहते हैं। अब उनके खुद के सांसद, उनके खुद के विधायक जब परेशान हो गए हैं और गुहार लगा के थक चुके हैं, जब आप उनका नहीं सुन सकते तो मणिपुर की जनता का क्या सुनेंगे? तो मुझे लगता है ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूं मणिपुर की जनता बेचारी, उनका क्या दोष है? उनका भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में आज एक ऐसा व्यक्ति शासन कर रहा है जो कि मणिपुर की जनता को देखना भी नहीं चाहता है। भरत सिंह जी, आज नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में थे, बोले राम नगरी में थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, जो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे है एयरपोर्ट। और फिर उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन कर दिया और कहा कि 15,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उन्होंने अनाउंस कर दिया अयोध्या में। और उन्होंने कहा कि
लोगों से अपील किया कि 22 जनवरी रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा। मैं 140 करोड़ भारतवासियों से कहूंगा कि आप अयोध्या न आकर अपने घर में श्री राम ज्योति जलाएं, श्री राम ज्योति। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज सबको रिक्वेस्ट किया अयोध्या में ना आकर अपने घर में ही रामलला का आगमन का राम ज्योति जलाकर स्वागत करें। तो आप इस इवेंट को कैसे देख रहे? 15,500 करोड़ भव्य एयरपोर्ट, ऐसे एयरपोर्ट जो टोटल मंदिर से एकदम कोरिलेट हो रहा है, रेलवे स्टेशन जो एकदम मंदिर से कोरिलेट हो रहा है। भरत सिंह जी, 15,500 करोड़ अयोध्या में, 15,500 करोड़ अयोध्या में दे दीजिए, चाहे 1,00,000 करोड़ अयोध्या में दे दीजिए, हमें उससे कोई शिकवा गिला शिकायत नहीं है ना बिहार जी। हमें गिला शिकवा शिकायत अगर है तो ये है कि आप मंदिर के नाम पे राजनीति कर और शुद्ध रूप से राजनीति कर। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि अयोध्या कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दर्शन करेगा प्रभु राम के और कौन नहीं करेगा। जिसकी भी आस्था इस देश में प्रभु राम में है वो जरूर जाएगा और जरूर करेगा। और रही बात सौगात देने की, तो आप सौगात इस देश की जनता को दे रहे हैं, तो देश की जनता का पैसा वो देश की जनता पे देना कोई सौगात नहीं होता है। जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे रहे हैं, उसी के पैसे से आज जो है आपको विकास करना है। तो आपने कितना विकास किया? देखिए ये जो है घोषणा है, 15,000 करोड़ जो दे रहे हैं तो घोषणा है। ऐसा घोषणा मुझे लगता है कि कुछ साल पहले जो है बिहार में भी किए थे कि बिहार में मैं इतने लाख करोड़ दे दूंगा। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री भी 2 बार बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारे उस घोषणा के इंतजार में, उस पैसे के इंतजार में बिहार की जनता जो है अभी जो है आंखें लगाए बैठी है। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जहां भी नए नए कार्यक्रम होते हैं वहां पे सिर्फ घोषणाबाज, तो एक तरह से कहें तो इस देश के प्रधानमंत्री घोषणाबाज प्रधानमंत्री हैं, जो सिर्फ जाके वादे करते हैं और घोषणाएं देते हैं। मैं वो पीछे रिकॉर्ड में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कितने घोषणाएं की थी और देश की जनता को क्या क्या उन्होंने दिया है। मगर ठीक है, एक चीज बहुत अच्छी है कि रामलला स्थापित हो रहे हैं, उनका भव्य मंदिर बन के तैयार है। हम सभी हिंदुओं की आस्था उसमें है, उसमें हमें भाजपा से आस्था लेने की जरूरत नहीं है और भाजपा से कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो भी हिंदू है वो सभी राम से प्यार करते हैं। भरत सिंह जी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अयोध्या में एक गरीब परिवार के घर में गए थे। गरीब परिवार जिसको उज्ज्वला योजना का बेनिफिट मिला था, करीबन कुछ महीने पहले 9.5 करोड़ शायद 10 करोड़ पार हो गए उज्ज्वला योजना। तो अयोध्या में जो गरीब परिवार है जिनको ये फैसिलिटी मिला, मोदी जी उनके घर, वो गरीब के घर गए थे, वो सब देखने हालचाल पूछने के लिए। और यहां पर है कि राहुल गांधी जी हमेशा आलोचना करते हैं कि लोगों से नहीं मिलते, मोदी जी लोगों से नहीं मिलते, मगर बीजेपी का कहना है मोदी जी देखो लोगों से मिलते हैं, गरीब से गरीब घर में जाते हैं, गरीब से गरीब जो काम करने वाले हैं उनके पैर धोते हैं। यानी आप समझ रहे हो कि एकदम गरीब से गरीब जो कचरा उठाते हैं ये उनका ऐसे लोगों का पैर धोते हैं, वो बीजेपी का कहना है। तो यह आरोप राहुल गांधी जी का थोड़ा उनको ठीक नहीं लगा कि मोदी जी लोगों से नहीं मिलते। आज अयोध्या में देखा होगा वो दृश्य जो गरीब घर में गए थे मोदी जी। भरत सिंह जी, बहुत अच्छा नाम बिहार जी। अभी आपने कहा था इवेंट, एक शब्द का उपयोग किया था इवेंट, तो ये भी एक बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी इवेंट करते हैं। स्क्रिप्टेड होता है सब, किसके घर में जाना है और किसके घर में नहीं जाना है। अगर अचानक अगर मोदी जी या देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो अगर ये फैसला ले ले कि मुझे जो है बगल वाले घर में जाना है या 10 घर छोड़ के जाना है, तो वहां पे पूरी की पूरी व्यवस्था और साफ सफाई और सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर अचानक आता है और मैं अगर बांद्रा से गुजर रहा हूँ, बीकेसी से गुजर रहा हूँ और मुझे लगा कि राजू भाई के ऑफिस में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे 200 पुलिस पहले से ही तैनात होगी। लेकिन ये स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्टेड देश के प्रधानमंत्री हमेशा इस तरह से जो है कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको देश की जनता के बीच में जाना है, मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी, आपको, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, चलिए मणिपुर चलते हैं,
चलिए मणिपुर चल के दिखाते हैं कि देखिए मेरी 56 इंच की छाती है और मैं डरता नहीं हूं, मैं मणिपुर आया हूं। अगर आप उस गरीब के घर पे गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर की जो गरीब जनता है, जो रोज वहां पे जो है पीसी जा रही है, तो चलिए वहां पे और चल के जो है उनसे मिलते हैं। राहुल जी गए थे, मिल के आए सबसे और फिर जाने वाले हैं। अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, 56 इंच की छाती है, तो छोड़िए सबको और चलिए मिल के आते हैं। भरत सिंह जी, एक और चीज है, एक और छोटी सी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल बात करेंगे। हर चुनाव के पहले, ये तीसरा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, ये तीसरा चुनाव है, और उसके बीच में भी तीसरा चुनाव मतलब 2024 में जो आएगा, और उसके पहले भी ऐसा हुआ 2014 के बाद जब स्टेट्स वगैरह में चुनाव हो रहे थे तब भी ये हुआ था, फिर 2019 के पहले हुआ और अब 2024 के पहले हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जी को चुनाव के पहले ही क्यों तलब किया जाता है सर, जरा बताएं भरत सिंह जी। देखिए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हरियाणा की सरकार ने क्लीन चिट दिया हुआ है रॉबर्ट वाड्रा जी को, क्लीन चिट देने वाली हरियाणा की सरकार। अब उसके बाद अब चुनाव आ गया तो फिर से प्रियंका जी का नाम ईडी के समन में आ जाता है। चार्जशीट में सर, चार्जशीट में एज ए विटनेस। हाँ, अभी एक्यूज नहीं, चार्जशीट में माफ करिएगा, चार्जशीट में नाम आ गया जी। तो आखिर वो क्या होता है ना कि डराने का जो जरिया है ना कि हम इस तरह से करेंगे तो डर जाएंगे। हर इलेक्शन में होता है, हर चुनाव में, कभी राहुल जी को, कभी सोनिया जी को, कभी प्रियंका जी को, कभी उनके पति वाड्रा जी को, इस तरह से जो है धमकाने की, एक तरह से कहते हैं ना, धमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि गांधी परिवार है। गांधी परिवार न पिछले 139 सालों से तब पहले डरा था गांधी और न आज डरेगा गांधी। गांधी बहुत मजबूत है। गांधी से लड़ेंगे तो आप बिखर जाएंगे, लेकिन गांधी परिवार नहीं बिखरने वाला है, क्योंकि गांधी परिवार के साथ 140 करोड़ देश की जनता है। मोदी जी, आपके और आपके कुछ लोगों के और आपके जो पिट्ठू कहते हैं ना कि जो है, उसके डराने से हम डरने वाले नहीं है। प्रदीप जी। तो भरत सिंह जी, 2 दिन पहले बीजेपी ने एक रिलीज निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि देखो हमने नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर में शांति के लिए क्या क्या पहल कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 563 इंसर्जेंट को हमने अरेस्ट किया, बहुत सारे आर्म्स इनसे रिकवर किए, पीस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट्स, बोडो, कॉर्बी, ब्रू, त्रिपुरा, इनके साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के एग्रीमेंट साइन किए। सीसेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद ZUF ग्रुप इन मणिपुर के ZUF ग्रुप्स के साथ भी उन्होंने सीसेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। तो ये उन्होंने डिपिक्ट किया कि हमने नॉर्थ ईस्ट के शांति में और स्पेशली मणिपुर के शांति के लिए बहुत काम किए। और आप राहुल गांधी जी यात्रा वहीं से शुरू करें मणिपुर में, तो क्या आपको लग रहा है कि ये इनके जब बोलना और लिखना और असलियत में बहुत फर्क है? भरत सिंह जी। नामिया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता आपको, हमको, सबको देख रही है और सुन, अगर आपने मणिपुर, आसाम या उत्तर भारत में, उत्तर की तरफ इतना शांति ला दिया है, तो राहुल जी 14 तारीख को पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी भाजपा, जितने मंत्रिमंडल में जितने नेता हैं, बड़बोले नेता, जो संसद में कूद कूद के, जब नरेंद्र मोदी आ जाते हैं ना नाम्बियार जी, तो होड़ लग जाती है कि कूद कूद के चिल्लाना चालू करते हैं कि मैं मोदी जी को कितना वफादार मैं बता सकूं कि मैं हूं। कभी स्मृति ईरानी जी, कभी उधर से जो है निर्मला जी, कभी जो है वहां से अनुराग जी, मतलब इतना चिल्लाना चालू करते हैं कि आका, मेरे आका देखो, मैं आपका वफादार, मैं वफादार हूं। इन सारे वफादारों को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी कह रहा हूं कि 14 तारीख को अगर आपने मणिपुर में, असम में, सब जगह एकदम शांति कर दिया है, एकदम शांति हो चुकी है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही है, आइए और साथ में पदयात्रा करते हैं। हम डरते नहीं है, हम जा रहे हैं, मणिपुर की जनता के साथ है, असम की जनता के साथ है, देश की जनता के साथ राहुल जी हैं। आप भी आइए और देखिए चल के कितनी शांति है वहां पे। है हिम्मत तो आइए।
आपको लगता है कि आपके इस निमंत्रण को वो स्वीकार करेंगे? भाई अब देखिए राजीव भाई, जिसकी 56 इंच की छाती हो, जो सारे सांसद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 303 सांसद, कुछ इखरे बिखरे यहाँ वहां के मिला जुला के 350 सांसद चिल्लाते हैं, मंत्री सारे चिल्लाते हैं, स्मृति ईरानी जी चिल्लाती है, तो भैया आइए ना 56 इंच का छाती वहां पे कहिए मोदी जी को दिखाने के लिए, और साथ में जो है 24, 25, 26, 36 आप लोग की भी जो छाती हो, आइए वहां पे चौड़ा फूला करके दिखाइए। 56 इंच का छाती किसका है ये पूरा देश ने देखा पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, और अब देखेंगे न्याय जो यात्रा निकल रही है हमारी न्याय का, और उस न्याय यात्रा में देखेंगे कि इस देश में 56 इंच की छाती किसकी है। उसका एक उदाहरण बताता हूं, अभी जो 2 व्यक्ति जब संसद में घुसे थे उस समय राहुल जी डट के जो है खड़े होकर सामने देख रहे थे, भागे नहीं। और वहीं पे देखिएगा कि जो संसद में भागना दौड़ना शुरू किया तो कौन से सांसद थे, किस पार्टी के सांसद थे, भाग रहे थे सब यहाँ से वहां तक, मेरे बाप रे मेरी जान बचे मेरी जान बचे। लेकिन जो मर्द होता है और जिसकी 56 इंच की छाती होता है वहीं पर डट के खड़ा होता है और देखता है कि हमारे लोगों को तकलीफ नहीं हो। राहुल जी बचाने की कोशिश की और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो न्याय यात्रा है 14 जनवरी से इम्फाल से शुरू होगी, आपको लगता है कि शुरू करने देंगे मणिपुर से? देखिए हम तो जा रहे हैं, यात्रा करेंगे, जिसको रोकना है वो रोक ले, हम तो अडिंग हैं, यात्रा भी करेंगे, देश की जनता के लिए करेंगे, मणिपुर की जनता के लिए करेंगे, आसाम की जनता के लिए करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करेंगे, बिहार की जनता के लिए करेंगे, उसके बाद में जो है हम महाराष्ट्र तक आएंगे और वहां सभी की जनता मतलब पूरे देश की जनता के लिए हम आ रहे हैं। जिस तरह से मनोज जरंगी पाटिल ने कहा कि हम आ रहे हैं 3 करोड़ लोगों को लेके, फडणवीस जी रोक सके तो रोक लीजिए, हम भी उसी तरह से कह रहे हैं कि देश की जनता के लिए न्याय यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो जनता को जोड़ने का, भारतीयों को जोड़ने का हमने एक तरह से काम किया और वो बहुत ही सफलतापूर्वक हमने किया। और जिस तरह से न्याय एकदम चरमरा चुका है इस देश में, न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी है, उसको जो है सही लाइन पे लाने के लिए, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं उन मीडिया वालों से भी दरख्वास्त करूंगा, मैं उन भाइयों से भी करूंगा कि आइए चौथे स्तंभ को गिरने मत दीजिए, कलंकित मत होने दीजिए, आइए और हम सब मिलकर जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब न्याय यात्रा में देश को बचाने का काम करें। देश बचा रहेगा तो हर पार्टी आती जाती रहती है, कांग्रेस हो जाए। भरत सिंह जी एक जो चल रहा है कि राम मंदिर, एक तो बहुत जबरदस्त चीज है कि न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा एक बहुत जबरदस्त, और उसमें सक्सेस बहुत होगा राहुल गांधी जी कांग्रेस को। बट ये राम मंदिर में, राम पुनर्निर्माण में जो आमंत्रण मिला है, अब तक इंडिया अलायंस के लोग उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बना रहे, क्या बॉयकॉट क्यों करना चाहते हो? जैसे प्रियंक खरगे साहब ने कहा कि देखो आपने राम मंदिर तो बनाया, राम राज्य कभी आएगा, हम तो चाहते कि राम राज्य आए। मोदी साहब जो जनता से जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। सैम पिट्रोडा जी कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप ये जो इतने मिसयूज कर रहे हैं राम मंदिर के लिए, इतना वक्त दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सैम पिट्रोडा जी ने कहा। सीपीएम आपके अलायंस सीताराम येचुरी ने कहा कि मैं तो टोटल बॉयकॉट करता हूं, मैं बिल्कुल इसमें फंक्शन से सहमत नहीं हूं। तो ममता दीदी नहीं जा रही है। शरद पवार साहब ने आलोचना किया, शरद पवार साहब बोले कि मोदी साहब के पास कोई दूसरा काम नहीं है, इशू नहीं है दिखाने के लिए 2024 में, इसलिए राम मंदिर को इतना बड़ा इवेंट मीन्स एक त्योहार टाइप बना रहे। और आदित्य ठाकरे जी ने कहा कि ये बाला साहब ठाकरे जी को भूल गए, लाल कृष्ण अडवाणी जी को भूल गए, और मुरली मनोहर जोशी को भूल गए, और संजय राउत कहा कि हम वो दिन नहीं जाएंगे, कोई और दिन जाएंगे। तो ये इतना इंडिया अलायंस ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि वो इसको नेग्लेक्ट करना चाहता है, बॉयकॉट करना चाहता है? भरत सिंह जी, क्या ये देश के लोग को एक ठीक मैसेज जा रहा है? देखिए 2-3 बातें हैं जो मुझे समझ में आई पिछले ये 3-4 दिनों में जो घटना घटी है, उसमें जो मुझे समझ में आया है, मेरा व्यक्तिगत मत है ये कि एक तरफ पहले आप कहते हैं मीडिया में, आपके मंत्री कुछ आगे कहते हैं कि कुछ लोग वीआईपी है और कुछ लोग वीआईपी नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसलिए उनको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, राजू जी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन नाम्बियार जी को तो वीआईपी नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को बुलाया जाता है, कुछ लोग को नहीं बुलाया जाता है।
फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं राजीव जी आप भी आएंगे, आपको भी भेजा जाता है। तो देखिए कंफ्यूजन में जो है वो खुद भाजपा है, किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। पहले डिक्लेयर करती है कि राजीव जी को नहीं बुलाना है, फिर उसके बाद में 2 दिन में जब दबाव बढ़ता है तो बोले राजीव जी को भी हमने पत्र भेजा है। तो पहले भाजपा क्लियर कर ले अपने आप में कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है, एक चीज। दूसरी चीज, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि सभी पार्टियों के नेताओं को, सभी पार्टियों को, आपका काम है आप उनको न्योता दीजिए और सबको बुलाइए। अब रही बात जाना या न जाना, देखिए इस देश में सब स्वतंत्र हैं, हम हिंदू हैं, अलग अलग जाति धर्मों से लोग आते हैं, सबका अपना मजहब है, कोई जरूरी नहीं है कि सब हिंदुत्व की बात माने, कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी इस्लाम की बात माने। इसी तरह से हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी आस्था को जाहिर करने के लिए, हम किसी पे दबाव नहीं बना सकते। लेकिन हम हिंदू, मैं हिंदू हूं तो मैं ये चाहता हूं कि हाँ राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति स्टार्ट कौन किया, देखिए आप, पहले राजनीति भाजपा ने शुरुआत की, इसको इनको बुलाते हैं उनको नहीं बुलाते, इनको भेजते हैं उनको नहीं भेजते। जिसने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली आप उसको बुलाते नहीं हो, जिसने हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की बात की, बाला साहब ठाकरे करते थे, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को आप बुलाते नहीं हो। बहुत सारी बयान उल्टा सीधा आपके मंत्री और आपके द्वारा आता है। तो क्या ये सही है? क्या ये इवेंट करके इस तरह से किसी को बदनाम भी किया जाए या किसी को बेइज्जत भी किया जाए? और उसके बाद में हमारे में कहावत है कि जूते चद्दर में जूता लपेट के मारना, तो क्या ये ठीक है इस देश के लिए कि आप जो चाहेंगे वो होगा, जो नहीं चाहेंगे होगा? अरे भाई सबके आस्था की बात है, जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व में कहते हैं ना कि भगवान में आस्था रखते हैं, वो जाएंगे, और जिनको आस्था नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते वो नहीं जाएंगे। ये किस जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता है किसी को जी। लेकिन ये आपका जो संदेश है सब तक पहुंचना चाहिए ना, सीधी सादी बात है, ये लॉजिक है, ये सब तक पहुंचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सब तक पहुंचेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज़ है भरत सिंह जी, हाल ही में 28 तारीख को, 28 दिसंबर को आपका एक विशाल प्रदर्शन हुआ नागपुर में, सेलिब्रेशन हुआ, 138वीं वर्षगांठ आपने मनाई, कांग्रेस की स्थापना की। अब आप 139वें साल में चले गए हैं। अपेक्षा ये थी कि तकरीबन 10 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां आएंगे, 10 लाख के करीब लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक और उनके कई चैनल्स के मुताबिक, मैं तो उनको, चलिए हमारे कॉलीग हुआ करते थे लेकिन अब जाने दीजिए, हर एक को ये बोल रहा है कि सिर्फ 80,000 लोग थे। भरत सिंह जी, भाजपा बोल रही है 80,000 लोग थे, और वही 80,000 का जो आंकड़ा है, कौन से चैनल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि बस इतने ही लोग आए थे नागपुर में। भरत सिंह जी, देखिए एक चैनल या 2 चैनल के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस जिस चैनल ने कवर किया है, ईमानदारी से सब लोग जानते हैं, करीब 8 से 9 लाख, इससे कम नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं खुद वहां पे था। सारी पूरा जितना ग्राउंड था वो पूरा भरा हुआ था जी। शुरुआत के समय जब शुरू हो रही थी, कार्यक्रम शुरुआत हो रहा था, उस समय का जब फुटेज आप लोगे तो खाली कुर्सियां तो दिखेंगी। जब पूरी तरह से भर गया तब तो आप नहीं दिखा रहे थे, तो आप तो ऐड दिखाने लगे, वो ऐड दिखाने लगे, और उसके बाद में आप कहते हो कि 80,000 ही लोग थे। तो जब शाम को पूरा बाकी के मीडिया चैनल ने चालू किया, दिखाना चालू किया, तो उनका जो है स्टेटमेंट भी बंद हो गया, और उसके बाद में जो क्लिपिंग है काट के दिखा रहे, ये कुर्सियां खाली है, ये कुर्सियां खाली है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सियां मैं बता दूं, और गृह मंत्री अमित शाह की इतनी मैं कार्यक्रमों की कुर्सियां बता दूं आपको राजीव भाई, कि जहां पे जो है वो 80,000 तो छोड़िए, मतलब 10,000 आदमी नहीं थे। ऐसी भी स्थिति भी हमने देखा है। लेकिन ठीक है, उनकी राजनीति है, राजनीति करने दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे कि लोग बीच में उठ के चले जा रहे थे। अरे भाई, किसी को बाथरूम जाना है तो नहीं जाएगा क्या? किसी को कहीं काम है तो जाएगा। लेकिन फिर भी आप वो विजुअल, शायद मुझे लगता है आपके चैनल के पास भी वो विजुअल है, चल रहा है सर, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, देख लीजिए, जबरदस्त दिख रहा है।
मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं वहां पे था, लेकिन क्या करेंगे, अब उनसे पचा नहीं जा रहा है। और उनके गढ़ में भाई, हम आरएसएस का गढ़ कहा जाता है कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है, उस गढ़ में अगर हम जाके धमाका करें और धमाके पे सुबह कहते थे सुभान अल्लाह, धमाका भी ऐसा कि 10 लाख लोग जो है हमने टारगेट रखा था और वो पूरा हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अपना आत्मविश्वास तो बढ़ता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के जो लोग हैं उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। और यही वजह है कि उनमें आपस में ही अब मतभेद है कि फडणवीस जी कुछ और कहते हैं तो गडकरी जी कुछ और कहते हैं। अब दोनों जन पहले आपस में फैसला कर ले कि कौन क्या सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। भरत सिंह जी, बीजेपी का कहना है कि झगड़ा यहां पर हो रहा है दोनों संजयों में, एक संजय निरुपम और दूसरा संजय राउत। संजय राउत जी ने कहा कि 23 सीट हमको चाहिए, 23 सीट, उससे कम नहीं होगा। हमने हमेशा 23 लड़ा है, 23 जीता है और उसे कम लूंगा नहीं। संजय निरुपम ने कहा कि ये अन्याय है, ऐसे कैसे 23 सीट आपको दे देंगे। प्रकाश अंबेडकर जी जो शायद जुड़ेंगे एमबीए से और इंडिया से, तो उन्होंने कहा हमको 12 चाहिए, 12 से कम लेंगे नहीं, और सब लोग 12-12 ले लो और 4-4 में हम लोग बंटवारा कर देंगे, सब 12 लड़ेंगे। तो ये कैसे होगा, कैसे होगा? ये युति का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। संजय राउत तो अड़े हुए हैं, बोले कौन संजय निरुपम, मैं संजय निरुपम जानता नहीं है, मैं सिर्फ कमांड, सेंट्रल कमांड ऑफिसर से बात करता हूं, जो राहुल जी है, सोनिया जी है। और तो कैसे कैसे झगड़ा कैसे समाप्त होगा भरत सिंह जी? देखिए, ऐसा है कि संजय निरुपम जी हमारी पार्टी के नेता हैं और संजय राउत जी भी हमारे गठबंधन के नेता हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात दोनों नेताओं की कहने की मैं 22 पे लड़ूंगा, एक कहे मैं 23 पे लड़ूंगा, तो भाई देखिए ऐसा है कि हम भी तो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी तो बड़ी पार्टी है। अब रही बात, संजय राउत जी कह रहे थे कि शुरुआत जो करना पड़ेगा वो शून्य से करना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो शुरू से ही लड़ रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं। कभी सबसे ज्यादा हमारी सीट तो मुंबई में हुआ करती थी, महाराष्ट्र में भी हुआ करती थी, ठीक है, अपनी जगह पे है। रही बात सीट बंटवारे की, तो सही में सीट बंटवारा जो होगा वो हाईकमान तय करेगा, मगर महाराष्ट्र के नेताओं के साथ, चाहे वो हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी, बाला साहब थोराट जी, विजय वडेट्टीवार जी, जो हमारे प्रमुख नेता महाराष्ट्र के हैं, उन सभी नेताओं को लेके हाईकमान बैठेगा, चर्चा होगा। और बैठे थे, अभी 2 दिन पहले जो है मीटिंग हुई है, वहां पे हम सभी विश्लेषण कर रहे हैं ना कि कौन सी सीट पे हम मजबूत है, कहाँ हम लड़ सकते हैं। देखिए, हमें चुनाव नरेंद्र मोदी से लड़ना है, और नरेंद्र मोदी से जब लड़ना है तो हर एक सीट का अपना एक मायने होगा। उस सीट को किस तरह से जीता जा सकता है, कौन सा कैसे जुगाड़ लगा के कौन सी पार्टी कहाँ पे कैसे लड़ेगी, कौन वहां पे मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत है, उस तरह से फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला होगा वो दिल्ली में फैसला होगा, मगर राज्य के नेताओं को लेके, उनको विश्वास में लेके ही होगा। ऐसा नहीं है कि संजय राउत जी के कहने की 23 सीट हम लड़ेंगे तो वो 23 सीट लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कुछ। संजय राउत जी अपनी पार्टी के लिए भाई तो लड़ेंगे ही, और संजय निरुपम जी हमारी पार्टी के हैं तो हमारी पार्टी के लिए निरुपम जी लड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर वो 23 सीट आपसे नहीं मांगेंगे, आपसे शुरू में ही अगर 13 सीट मांगेंगे तो आप तो उनको 6 भी नहीं देंगे, सीधी बात है ना। तो वो तो ज्यादा से ज्यादा ही मांगेंगे और क्या करेंगे। लेकिन चलते चलते आदरणीय सामान्य एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ये कहा है मनोज झरंगे पाटिल साहब को कि भैया आप इत्मीनान रखिए, और उन्होंने इत्मीनान रखा है, उन्होंने सब्र से काम भी लिया है। मुंबई को उन्होंने बिल्कुल जैम नहीं किया। वो कह रहे थे कि वो कितने 8 करोड़ लोग लेकर के आएंगे, पता नहीं कितने लोग लेकर के आएंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि फरवरी में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उस सेशन के दौरान मराठा आरक्षण का जो कानून है वो पास कर दिया जाएगा। आपका इसमें क्या कहना है? इसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1, क्या ये असेंबली के हक में है, हक के दायरे में है, स्टेट असेंबली के? जहां तक मैं समझता हूं ये तो सेंट्रल इशू है, ये तो पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन में या पार्लियामेंट के सेशन में पास हो सकता है। नंबर 2, आचार संहिता लगने के बाद, आचार संहिता जहां तक मेरा ख्याल है फरवरी के एंड तक लग जाएगी या मार्च तक लग जाएगी, तो ये कहां तक कारगर होगा ये नया लॉ पास करना? भरत सिंह जी। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया, राज्य सरकार के पास अब कोई गेंद नहीं बची। जो भी होगा वो सेंट्रल से होगा,
विशेष अधिवेशन बुला के पार्लियामेंट का किया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ही तय हो सकता है। ये जरांगे जी को बहुत अच्छी तरह से पता है और यही वजह है कि वो कह रहे हैं मैं 20 तारीख को जो है आ रहा हूँ मुंबई जी। अब जो है नया लॉलीपॉप जो है शिंदे जी देना चाह रहे हैं। शिंदे जी खुद फंसे पड़े और शिंदे जी अकेले पड़ गए। ना इसमें फडणवीस जी हाथ डाल रहे हैं और ना इसमें अजीत दादा डाल रहे हैं। अजीत दादा को जैसे जरांगे, अगर मान लीजिए जरांगे जी अगर पौष पे बैठते हैं, उपोषण पे बैठते हैं और कुछ कहते हैं तो उनको जो है तुरंत कोरोना हो जाता है। वो सीधा जो है पल्ला झाड़ के अपने जो है आराम करने लगते हैं। उनको पता है कि ये जो है अगर हाथ डाला तो मेरा हाथ जल जाएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं इस मामले से पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी पूरी तरह से दूरी बना के रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे डीसीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी कहीं ना कहीं इसे अपनी दूरी बनाए हुए रखना चाहते हैं। पूरा का पूरा जो है वो सर पे ठिकरा फोड़ने वाले हैं जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। अब ये देखना है कि पहली बात, क्या एकनाथ शिंदे जी 10 तारीख तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं कि नहीं। मामला तो यहाँ पे अटक रहा है ना। पता चला कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री पद से निकल गए, उनके खिलाफ फैसला आ गया। तब दूसरा मुख्यमंत्री बनते बनते सरकार बचती है कि नहीं, सरकार रहती है कि नहीं, ये सारे बहुत सारे दाव पेच अगले महीने में होने वाले हैं। तो ये समय बताएगा कि जरांगे जी आते हैं कि नहीं मुंबई, ये समय बताएगा कि सरकार चल पाती है कि नहीं, ये समय बताएगा कि मुख्यमंत्री शिंदे जी रहेंगे या नहीं। अब ये सारे किंतु परंतु में अब कुछ दिन का और मामला है। मुझे लगता है कि अगले 5, 6 तारीख, 10 तारीख तक ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या करने वाले। हाँ, लेकिन राज्य से और जो सरकार चला रहे हैं राज्य में 3 पहिए की सरकार, इनके हाथ से मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये मामला फिसल चुका है। अब केंद्र के पाले में है और केंद्र इसमें कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता है। बट आई डोंट थिंक द सेंटर हैज एनी चॉइस। सेंटर के पास तो अभी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अब जो पार्लियामेंट का सेशन होगा दैट विल बी ओनली फॉर अ वोट ऑन अकाउंट। वो तो आधे घंटे का होना है, क्योंकि देखिए साहब, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं इस बार, बजट सेशन तो होगा नहीं, क्योंकि बजट तो प्रेजेंट होता नहीं है जिस साल में चुनाव होते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट होगा और कोई बिल पास नहीं होगा उस वक्त। जी राजीव जी आपको इससे समझ लेना चाहिए पूरे मराठा आंदोलन का समीकरण कि पिछली बार जब जरांगे जी उपोषण पे बैठे थे तो देश के प्रधानमंत्री बगल में ही शिरडी में आए। अगर उनको इतना ही मराठा आंदोलन से लेना देना होता, अगर वो चाहते कि ये मामला निपट जाए, तो वो जरांगे जी से बात भी कर सकते थे और सबको बुला के जो है इस पार्लियामेंट में उसको पास भी करवा सकते थे। केंद्र कहीं से भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाहता है और इसका फैसला भी मुझे नहीं लगता है ये सरकार कर पाएगी। हाँ, हमारी सरकार आएगी, हम जरूर इस पर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। भरत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जो है नेशन नाउ को देखने वाली जनता को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। राइट, थैंक यू वेरी मच भरत सिंह जी, नमस्कार। And at the moment with us, our very old friend from the BJP, the man who's just been honored by the BJP top brass for spreading the message of the BJP among the Muslim community, Mr. Ali Daruwala. Daruwala sahab, namaskar. Namaskar, Rajiv sir, Pradeep sir, and thank you so much for the congratulations. Thank you. And very, very happy New Year to you. It's coming. I know it's just early days yet. It's just one day in advance, but all the same, very, very happy New Year to you. Same to you and to everybody and all the staff in the studio also. And in the studio and outside the studio too. Yes, sir. So Ali Daruwala sahab, what do you expect in the new year for India? As I said, the clock is ticking. 2024 is here. We are going to head for the election. And very guardedly, I had said that this 5 states we were looking at, and we were going to come up with the flagship programs, and the citizens of the country has accepted
the citizens of the country has accepted the policies of our Prime Minister and the party. And now for 2024, the roadmap that we are laying, Shri Ram Janmabhoomi Mandir Nyas का जो 22nd का program है, that is just the beginning of the new era. There are series of things that are going to be rolled out, and all these things that are going to be rolled out are connected and are niggard and are based only on the development of our country. As I told you, we are aiming at 2047, where India is going to be a superpower. विकसित भारत का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा, उसे वो हकीकत में उसको वो अमल करने के तरफ काम कर रहा है. Fantastic. Darwala Sahab, Narendra Modi ji, the Prime Minister in Ayodhya, unveiled 15,500 crore projects in Ramnagari, that is Ayodhya. The airport, which is named as Maharishi Valmiki Airport. Then he talked about the fantastic railway station. It looks better than the airport. I mean, you can compare it to world-class railway station, Ayodhya Dham Junction. And he went ahead, one great thing that he done, एक गरीब परिवार के दरवाजा साहब गरीब परिवार के घर में गए जहाँ उज्ज्वला योजना beneficiary going to a poor man's house, an extremely poor man's house who has been a beneficiary of the Ujjwala Yojana of yours, which till a few months back was 9.5 crore beneficiaries. I think now it has reached 10 crores के आसपास पहुंच गया है. Now that Rahul Gandhi's claims that Prime Minister Modi doesn't meet the poor, doesn't interact with the poor, doesn't have a conversation with the poor, is it proved wrong? How do you see the entire Ayodhya thing today? Darwala sir. Pradeep sir, I'd like to correct the figures that you said. 15,500 crores, the corridor, the railway station, the airport is just the tip of the iceberg. The total money allocated to Ayodhya and the development and on the corridors and on the foots of this era, I can proudly say it is not 15,000, it is 85,000 crores that is going to be spent in a period of 1 year to make Ayodhya a tourist destination and a pilgrimage destination. This is the money that we have earmarked for Ayodhya itself, and all the roads connecting the vicinity is going to be revamped. Airport, railway station is just the tip of the iceberg. There are lots of things that are going to follow, and it's going to be a pilgrimage destination in the country. And the amount of tourism that is going to go up and the revenue that is going to come up, besides it being the most sacred shrine, the development of the state which was neglected, it was purposefully kept backward to suit a certain lobby, has been totally dismantled, sir. Wonderful. And yes, please go Darwala ahead. Sahab, now we can understand, but the Congress, Sam Pitroda said that Prime Minister Modi is devoting too much time for this Ram Mandir activities. Mallikarjun Kharge's son, Junior Kharge, Priyank Kharge, he said the Ram Mandir to ab bana de, Ram Rajya kab aayega. Now that was that. Now if you say India Alliance, Mamata Banerjee will not be there. Uddhav Thackeray, he will not be there. Sharad Pawar Sahab said that, again the same thing, that Prime Minister Modi is hyping this Ram Mandir thing because he's got done nothing which he can announce for 2024. Now how do you see these opposition judges, Sam Pitroda, Junior Kharge, Mamata Didi and Sharad Pawar ji and Uddhav ji, how do you see their remarks about not participating in the Ram Mandir celebrations? Sir, to set the record right, Honorable Prime Minister is not observing or is not part of day-to-day activities. There is a NIAS, there is a body who is managing, who is taking care into the activities, the selection of the temple, selection of the clothes, the venue, the architecture. There is a total NIAS, there is working, there are architects, there are educated people, and there is a committee. Honorable Prime Minister has been given the honor of inauguration, though as a party head, the crown goes to our Prime Minister, to Mohanji Bhagwat, and to the High Priest of the Ram Mandir. That is the way a protocol has been set. Definitely, Prime Minister is not be all and end all of his day's work. He may be allocating little bit time for the inauguration to oversee, because it was the mandate, the agenda of Bharatiya Janata Party that Ram Mandir will be done, completed in 2024. We are just going to overlook at the last promise that we have made along with Uniform Civil Code, and then we will go into election.
And Honorable Kharge ji, Sharad Pawar sir, Uddhav ji is saying that they don't want to be part of it. Yes, they may not be part on the day of the inauguration, but I suppose they will change their mind. But they are part of the Ram Mandir, the Ram Rajya, because Uddhav ji has fought shoulder to shoulder with each and every car saver, and you cannot take the credit away. Honorable Uddhav Thackeray, the way he has been treated in this India platform, how he's been thrown around, and the amount of respect he had when he was with our party is really what the people should see, and his Shiv Sainiks should see how the Ubata Sena has been treated by this India alliance. And next person who will be ill-treated is Sharad Pawar ji. These two stalwarts are local neta, and they do not deserve to be treated the way they are treated on the India platform, sir. But our friend Mr. Sanjay Raut says that you have deliberately ignored Uddhav Thackeray, the son of Bala Saheb Thackeray. If you remember, Ali Darwala Sahab, I don't know if you remember, you seem to be too young for that. On the day the Babri Masjid came down, on December the 6th, 1992, Senior Vice President of the BJP, Mr. Sundar Singh Bhandari, was asked कि भाई ये बीजेपी वालों ने कराया क्या कि वीएचपी वालों ने तोड़ी है. Sundar Singh Bhandari Sahab said, I don't think they are BJP workers, they must be Shiv Sena workers. To which Bala Saheb Thackeray had replied, if they are Shiv Sena, if they are Shiv Seniks, I am very proud of them. I'm proud, yes. That's what he said. 100%. So you cannot take the credit away. As I said, sir, yeah, absolutely. Uddhav ji has fought shoulder to shoulder. May it be Vishwa Hindu Parishad, it was the Sevaks, it was the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, the Jan Sangh. It is the why has Mr. of each and Uddhav every Hindu, Thackeray sir. not been invited? Rightfully speaking, there should have been a personal invitation from the Ram Janmabhoomi Nyas and the Hanuman Akhada along with the government to Mr. Uddhav Thackeray. आप बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, आपको यहाँ आना बहुत जरूरी है. Politics aside, he should have been invited, sir. That's my opinion. Sir, 100%, sir. There are 22, 21 days to go. Definitely, the high brass is working, and this sentiment that you have passed on to me will definitely be taken to the right forum, and it will, in case if it has not gone by now, I'm sure the top brass, Honorable Prime Minister, and our entire team is working, and I am reassuring you, Uddhav ji is part of this movement as much as each and every car sevak and Bharatiya Janata Party, Vishwa Hindu Parishad, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता जितने इसमें रिस्पांसिबल है, उतने ही उद्धव जी और उनका परिवार भी रिस्पांसिबल है. Even I have not been invited. Yeah, so as I, but we have been asked to I have be not been invited, and I was part of the movement right from day one. On the day when the firing took place, when Mr. Mulayam Singh Yadav was the Chief Minister, I was in Ayodhya, and I made a documentary film on the same. It's still there. It's called Pran Jahu Par Vachan Na Jaho, for the Vishwa Hindu Parishad. It has my voice. Great, sir. It has my script and my voice, and I made that film. And even I have not been invited. But then that is also because quite a few people who were there at that time are no longer there. Like Advani ji is retired, Dr. Murli Manoj Joshi Saab is retired, and Pradeep ji, our old friend, Secretary General of the Vishwa Hindu Parishad, Kaushal Kishore Saab, is no longer there. And Uma Bharti ji, who was very much in the forefront at that time, and she was mistreated so horribly, I still remember, they deliberately threw cold water on her, and they deliberately hit her with sticks and all. That is my footage, by the way. And none of these people are being given pride of place right now. What's going on? Ali Darwala sir. Forget about me. I'm talking about everybody else. Rajiv sir, definitely what you are saying, the sentiment has passed. I have really taken each and every sentence that you have said very seriously. We will take, I personally will inform my office your sentiments, and if this is done, this should not be done. These are the people who have shed their sweat and blood for Yes, the they have. Structure that we are seeing today. And broken it will bones. definitely be rectified, sir, if it has not yet been done. And I hope at least all those people who were killed by the bullets of the PSC, the Provisional Armed Constabulary, on that particular day, on the orders of Mr. Mulayam Singh Yadav, the Chief Minister, I hope at least their families have been invited. Yes, Rajiv sir, I'll tell you, it's not a one-day affair. It's going to be a year-long affair where people are going to be invited.
that particular day maybe for security reasons, but I can assure you, Rajiv sir, it's a year-long process. In the meeting of the Sun, it was decided that the certain amount of people will be there, but this celebration will be all across the country. We have been asked to be prepared. Television is going to be provided. Yes. It's from 11 o'clock to 2 o'clock. Each and every, हर एक जनमानस ये celebration के अंदर, regardless of his caste and creed, is going to be involved, because जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर है, वैसे राम जी जो है वो भी पैगंबर से कम दर्जा उनका नहीं है. Ali Darwala Sahib, now Prime Minister Modi has said that he has appealed to 140 crore people, Indians. He says, आप सब उत्सुकता से अयोध्या आना चाहते हो, पर अयोध्या मत आइए. आप अपने घर पर रखिए, श्री राम ज्योति जलाइए, श्री राम ज्योति जलाइए. That will be the greatest thing. Ramlalla is coming back after 50 years. 50 years, the celebrations by the way of Shri Ram Jyoti. That's what Prime Minister Modi said. And Yes, you know, sir. yes, Boli Darwala sir. Yes, sir. See, it has been decided that the main prasad, the main langar will be distributed in the cities, in the prominent cities, metropolitans. Over there, we have been asked to prepare more, that is the prasad. It will be mixed, the original prasad will be mixed, and it will be given, distributed by our sevaks in each and every houses. No one will be left. Our Karyakartas, the Sun, the Bharatiya Janata Party, and volunteers who are not even connected to BJP, but who have the Shraddha for Prabhu Shri Ram, are going to work on this day. And Prasad is going to, I'm going to make sure, at least in my area in Pune, Prasad is going to go into each and every house, regardless of their caste, creed, and religion and color, sir. Fantastic. There also, you know, in Nagpur, the Maharali of Congress, Rahul Gandhi, KC Venugopal, he said that the slogan, "मैं तैयार है तैयार हम." The Congress is ready, है तैयार हम, and the entire Bharat Nyaya Yatra is going to go through 14 states, 85 districts, 6,200 kilometers. Rahul Gandhi himself is going to lead the charge. He says on 14 Jan 2024. That means they are preempting what Prime Minister Modi, your event on 22 Jan, उसको preempt करके 14 तारीख को राहुल गांधी मणिपुर से लेके महाराष्ट्र, मुंबई बड़ा यात्रा निकाल रहे हैं. How do you think it's going to begin? Congress believes this is going to be a fantastic impact on the electorate. न्याय मांग रहे, न्याय, अन्याय. Is some injustice going on in the country, sir? Darwala sir. Sir, we are been listening to this, that first they said constitution खतरे में है. Now हम न्याय मांग रहे. Sir, this toolkit that they come up with has each time been exposed. I am so happy Rahulji will at least travel across the country, get to meet people and get the grassroots level, as he refuses to accept the flagship programs that we have done. I'll be so proud that he'll be traveling on the same roads that have been made in last 10 years. The amount of roads were double, which he will use. And while traveling, I believe and I hope and pray to God Almighty that he has been enlightened. And when he comes back, we may be surprised कि उसे न्याय मिल गया और वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के member बन गए. That he might join the BJP. Wonderful. Yeah, looking at the development, I'm not sure. He may be enlightened, sir. Wow, that'll be something. But there is one thing which the Congress keeps attacking you with. They say, and they're not wrong really, that the situation in Manipur has still not returned to normal. It's been 7 months and the Prime Minister has still not found time to visit Manipur. Mr. Darwala. Sir, to put things on record right over here, Honorable Home Minister Amit Shah sir personally is looking into the matter, and Amit Shah, being the Home Minister of the country, is monitoring. As you see the success we got in Assam, now the same policy, the method we are trying to work out in Manipur. I do not know how successful we will be, but the situation is seriously grave. It cannot be taken lightly. Each life lost over there is really a loss to the country. Prime Minister, I'm sure, is also very well aware of what is happening. We need to deal with it. Manipur is really a very old issue that has come up, and it's a very local-centric issue, but it needs to be tackled. And I'm sure Amit Shah sir is toiling day and night. And let us give some time, sir. I'm sure
he will come out with a solution, and it's And really, they have really deliberately painful chosen to see Manipur. Manipur burning, sir. They have deliberately chosen Manipur because the Prime Minister has not visited Manipur, the Congress. That's what Sir. they say. Correct, sir. If there has been some lacunas or some shortcomings, we definitely, sir, we welcome it. And Honorable Prime Minister, as I say, he's been tied up. Now we have just got freer of election, but Manipur is on the topmost list in his agenda, and Manipur needs to be dealt with, sir. I Where are really you take free of the your elections? Sir? suggestion Elections are just positively, sir. starting. The elections are starting. Rahul The Gandhi. elections are just starting. Pradeep ji, just 1 second, please. Elections are just starting. You're now going to be very, very busy in the 2024 elections. And your Ram Mandir celebrations, you say, are going to go on all throughout the year. But there have been over 1,000 sites which have been selected all over the country, where the inauguration of the Ram Mandir and the Prana Pratishtha Puja of Ram Lala will be celebrated. And naturally, the offshoot, the fringe benefits of that are going to come to the BJP. Ali Darwala sir. Sir, to set the record right, Ram Mandir inauguration is not to take any benefits for our coming election. It was always been on the Do you agenda. believe that? Regardless, Do you we were sincerely in party, believe that? we were Ali not in Darwala power. sir, This you are thing an was going educated to man come. and a It is the civilized will man. of God which is coming through, and definitely I don't think anybody is going to stoop to the level of taking fringe benefits of the erection of the holy site, sir. All Well, right. if people, You believe that? definitely, And then sir. I am the There's Pope's not going to uncle. be. We're not going to blow the trumpet like हमने if किया. you It is believe not that, हमने then नहीं my किया. name is ये Pope भारत Francis के the Sixth. जनमानस ने किया है, sir. ये. Ali Darwala sahab, if you genuinely believe that, then my name is Pope Francis the Sixth. I am the Pope. Let's be very clear. Mr. L.K. Advani started the Ram Rath Yatra, and Yes, from yes, 2 sir. seats, you came up to 303 seats today because of that same Ram Rath Yatra. Are you trying to tell Definitely. me? Are you No, trying to tell me definitely. that this Ram Mandir Lord will Ram have no has effect blessed on you? us, but for our clean intention, sir, and not for getting the Ram Mandir. I can assure you, sir, it is not that. And now you will see, Rajiv, sir, you will see the Muslim population voting for Bharatiya Janata Party. The day and night that I've been working is connecting. You will see areas like, the Muslim areas that were called mini Pakistan. There are BJP offices that have opened up. We have worked so hard and we have gone there with flagship programs. I have not gone in any Muslim area claiming and making any tall claim that हमने Ram Mandir बांधा है. Sir, they have come to us for the Swachha Jal they have got in the pipeline, for the gas in their house, for their bank accounts being opened, the direct transfer being given to them, for the loan and the money which they have taken for housing, to it, the money under the scheme which these people have got. It is because of that people have opted for BJP and not for Ram Mandir. I'd like to reassure, and let us not twist it and as you want to do a debate, definitely we are not going to ask and bask for glory for Ram Mandir. Right. Yes, if people do think we are responsible, I'm really grateful. But you are responsible. But you are responsible. Let's be very clear, as far as Mr. Modi is concerned, nobody can take the credit away from him for the fact that he is responsible for the Ram Mandir. He is. I mean, उसमें क्या है? Yeah. Sir, the fact is, Supreme Court में जिस तरीके से the government of India pursued the matter, आज तक कभी इतनी ज़्यादा intensity के साथ, इतनी ज़्यादा गंभीरता के साथ आज तक कभी matters pursue नहीं हुआ. So that credit goes to you. It goes to the BJP, whether we like it or not. That remains. So which means we are looking at how many seats now? 370, 400, 400. Sir, ये शो का नाम ही मैंने दिया, आपकी बार 500 पार. 500 पार. He is the most aggressive and the most optimistic, Mr. Darwala. Yes, Mr. Darwala, go ahead. Yeah. So secondly, as you said, the credit goes to Bharatiya Janata Party, to Narendra Modi ji, Yes, it to does. the Ram Bhakt, to the Ram Lala. I, at the same breath, would like to even say that the credit even goes to Muslims, because I'll tell you why. When the Supreme Court verdict was declared, there was not a single stone pelted. There was not a single riot that took place in this country. Sir, I am very, Quite very true. grateful to all I the agree. Indian Muslims also, because they are first Indians and then they are Muslims. There was not a single agitation. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सर आंखों पर उसको एक्सेप्ट किया, सर. So the credit, the shray even goes to each and every Muslims. The
22 crore Muslims in this country. Absolutely. 24 crores, sir. 24. 2 crore क्यों खा गए सर? 24 करोड़ हैं. 24 crore. India can now boast I was going to of say 18% population of this country. Sir, India can now boast of having the largest population of Muslims anywhere in the world. It is in fact the largest Muslim country today, India. Yes, sir. Darwala Saab, Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi today said it is absolutely essential that we get together and we defeat the RSS and the BJP. RSS and BJP is destroying the country. And they give an economic, approach that says crude oil has become cheap. Crude oil is cheap. In the last 19 months, the crude oil is cheap by 29%. That is what the Congress says. But the petrol and diesel has not reduced. It is going on increasing. Now, what could be the reason, Darwala Saab? The Congress is saying the BJP and the RSS are destroying the country. So, as I told you, we are the fag end of the 2024, our 5-year term. Flagship programs are almost clearing completion. And as they say, Ram Rajya aane wala hai. So, I can not officially say, but I can say Ram Rajya के अंदर जैसे लोगों के घर का चूल्हा ईंधन सस्ता होना चाहिए, तो I would not be surprised if in the coming year and in a few days, if a good announcement is made and Honorable Prime Minister has definitely taken it seriously, and I think Rajiv sir, this time we can expect a rollback, sir. And in fact, there is speculation to the effect that there will be at least a 10 rupee rollback in the price, say by the that's what the CNBC is carrying the news, but it's been worked out, and definitely there should be a rollback because Qatar gas, we have got relief from the US, from the Russian oil, and now I do not see any hesitance in passing on the benefit to the armed janata. And by the way, congratulations for Indian diplomacy, really and truly wonderful work. The death sentence passed on the 8 naval officers in Qatar has been commuted. What will be the extent of their prison sentence? We don't know, but that also is still being worked out. So congratulations. Yeah, great. We are not celebrating. It is battle not won. We need to take it ahead, and I'm sure the extradition should be done. And Jai Shankar ji is not going to sit idle. I am sure. Best news. We get all our people back. We will not be resting, sir. Best news for the new year. Pradeep ji, aapko Rahul Gandhi, wapas, you tell me why. Rahul Gandhi just 2 days back, even the Nagpur session said that, the Jati Janganna se BJP is scared. The Prime Minister Modi is scared of a Jati Janganna. Again, Rahul Gandhi goes back to the same thing. 90 officers are running this country. 90 IAS officers are running, bureaucrats are running this country. And when I asked the Prime Minister and the BJP, how many of them are OBCs? The BJP is trying to shut me down. The BJP is trying to shut him down. Is the BJP trying to shut Rahul Gandhi down? Are you scared of Rahul Gandhi? Sir, to begin with, this caste census, this reservation, and it's totally really, really sad what is happening. But anyway, if that's what the thing has to be, it has to be. Over here, my Prime Minister said there is only 3 jatis that he believes in. One is the Mahila, one is the have-not, and the farmers. He said, I'm going to work for this poor people. Agar jiske paas इकोनॉमिकली वीकर है, उसके लिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए मैं काम करता हूँ. ये कास्ट सेंसस इज ऑल हम्बग. आई डू नॉट नो व्हाट. यस, आरएसएस के बारे में जो कह रहे हैं, आरएसएस बिलीव द फंडामेंटल्स. जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो भले कोई भी जाति का हो, उसका जिंदगी में ऊपर लाना है. उसका लाइफ के अंदर जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको ऊपर लाना है. और संघ परिवार सोशली बैकवर्ड लोगों को आगे लाने में विश्वास रखता है, भले वो कोई भी जाति के हो. जी. And by the way, the price of oil at the moment in the international market is $77.08, which I think is a great relief from the over $100 that we were experiencing till 6 months ago. Yeah. But 82 it was looming, sir. But it was fantastic. It's about 77.08 right now and likely to go down. Brent futures. Likely to go down, yeah. Brent futures predict that in because we are having a severe winter, yes. And if it's normally in winter it crosses $120 per barrel. But if the demand is still low in winter, so we can see a very dramatic fall in the crude prices in future. So which means and definitely it is
One sec. So definitely it is the international market that will help the crude prices to go down, and not that elections are there on the face. That also I'd like to make it clear, sir. Pradeep ji, one second. But the fact is, when the crude oil prices were down to $45, in fact they came down to $42 a barrel. $20, Rajiv said, to set the record right. All right, Yeah. $23 a barrel. In spite of that, India did not reduce diesel and No, it did petrol not. prices. We didn't. We did not, because the debt left by the Manmohan Singh government on the oil pool account was huge. I can understand that. But now that you've paid, now that the interest payments on the same have been made, and the next interest payment will be due, I think, 7 years later, I'm sure you can afford to give some relief to people. Not 10 rupees, perhaps 20 rupees would be far better. There is a very big strategy that this government followed. Crude had almost gone to $20 a barrel. Yes. At that point in time, our nation picked up the oil and our strategic reserves were filled up, sir. You will be surprised that whatever our military strategic reserves, our nation's reserves, our oil tanks were all tanked up and kept for when the day comes when the oil barrel goes up, this reserves could be used. So this country has worked very seriously और बहुत ईमानदारी से ये शासन ने काम किया है सर. और आज अगर ये $70-60 पे अगर आता है, तो आज मेरा देश ये बेनिफिट जनता को देने के लिए सक्षम है. कांग्रेस संघर्ष कर रहा है, दारूवाला साहब. कांग्रेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे संघर्ष कर रहा है. बोले 19 मंथ से 29% चीप है, फिर भी you have not passed it on to the consumers. They accuse you of that. So as I told you, all the flagship programs are funded. 80% funding is coming from petroleum, and for this nation to become a Mahashakti, we need to take some very stern steps. Selling petrol at 105 and diesel at 1992 is one of the very bitter pills that the citizens of this country had to swallow, sir. Right, and by the way, the old video of Mr. Narendra Modi talking about the price of crude and the price of the rupee to the dollar is being circulated again and again and again by the Congress. क्योंकि अगर आपको याद होगा 2013 में आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अगर डॉलर के सामने रुपए की कीमत गिरती है तो इसका मतलब सरकार भ्रष्ट है. उस वक्त डॉलर के सामने रुपए की कीमत 65 रुपए थी, 60 और 65 रुपए के बीच में थी. नहीं, 65 भी नहीं थी. इनफैक्ट इट वाज अराउंड 60. इट वाज अराउंड 60 और you know exactly what was the price of diesel and petrol at that time. Today the rupee is trading at about 83.07 against the dollar. So that thing is circulating all over the place. I'm not saying it is getting traction, but you never know, it might. Darwala sahab. Yeah, no, coming back to that, this rupee-dollar ratio and Yes. this market volatile, it is very volatile. But you'll be surprised as to rupee is going to get stronger in coming days compared to the dollar. And the unrest in US is not, they have been producing, they are printing currencies to keep the market high. Whereas India is not doing what US, the mistake that US is doing. In the long run, maybe now you will not see an immediate relief or immediate dollar to rupee ratio, rupee becoming stronger. But in the long run, consistently rupee will be stronger, and so slowly and subsequently, we are going to become the But is it market really leaders. beneficial? I'm so sorry, I'm asking a totally different question. You're an economist as well. You've read the market. Is it really beneficial? Rupee going down to 60 rupees. I mean, that'd be stupid. Yeah, our exports are really going to suffer. You already have a huge deficit in terms of your external debt. You have a huge IMPEX deficit. It's really going to suffer if the rupee becomes stronger. Exactly. Answering to that question, answering it going to 60, the ratio going to 60, which should not affect us, because at different nations at a different level, you see India has begun and is beginning and are working towards trading in rupees. If our rupee becomes stronger, and we do not want to keep dollar, means that is what it's our vision. We do not want to keep dollar as our trading currency. India wants to, and that is one of our ambitious programs, where we want to trade in our currency. You already have 23 our currency, yes, sir. Yeah, in Qatar, if you can see, in Russia, we are all dealing in rupees now. No, not in Russia. Do it globally, so, time out, Russia. We are paying the Russians in the Chinese yuan. They don't want rupees.
we've got so many rupees, we've got more rupees right now than the Reserve Bank of India. Sir. Correct. Ali Darwala Sahab. Correction over there. Yeah, correction over there. We are paying them in the Chinese yuan. We are not paying them in dollars. To a Right, ratio, true. we will definitely benefit, and we are looking at. So there are big and good minds working on this, sir. I mean, we really not. सर आप जा रहे हैं कि नहीं ये prepare बताइए. for this. चलिए सर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? 22 जनवरी को आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? रामलला का दर्शन करने के लिए ये तो बताइए. Sir, Rajiv sir, I would prefer to be here, get all my Muslim brethren in this city to get activated. And as you say, the puja, we call it the Fatiha, the Niyaz. And this is what I will be wanting to do on the 22nd of Jan. Get my Muslims also involved in this auspicious occasion, sir. You know, I want to ask about Supriya Sule's Kisan Akrosh rally. You know, how impactful it's going to be? Because Supriya Sule seems to be, you know, galvanizing all the farmers because they believe injustice has been done to the farmers. Aukal ani Aukash. Every time the farmer suffers and this government has not been doing anything. Rahul Gandhi. Sir, the most beneficiaries in this state, in Maharashtra at least, I will tell you, have been the farmers, sir. The farmers' ki account mein, regardless, money has been transferred. The Devendra Fadnavis, Devendra Fadnavis government, when we came into power after Uddhav Thackeray ji went, so they have worked relentlessly towards bringing the condition of the farmers up. The farmers who had 2 acres, 2,000 rupees were directly transferred into the accounts. You can ask the farmers on the ground. The farmers are the most happiest in Maharashtra. Supriya Sule may be trying to trigger whatever support, but I can assure you she will really be let down very badly, sir. So she said she's not going to come to Mumbai till October 2024. You think she's with the farmers or with solving the Baramati problems? She thinks that Baramati has to be safe. You've been very close to Baramati. How do you see the situation there? Sir, it's a losing bastion, but I would be very guarded with my words. Honorable Sharad Pawar ji is a local neta and that credit can never be taken away. But I do not know how it is transformed into the daughter. I do not really know. But what she said about this Akrosh Yatra is going to be a super flop, I can assure you, because we have gone with relief and we have gone with programs to farmers and we have been welcomed, sir. Wonderful. So now we'll expect 1,000 odd cities to celebrate, cities and other places, wherever Sri Ram has been. अयोध्या से रामेश्वरम तक श्री राम की जो यात्रा रही उसकी सेलिब्रेशन होगी हर जगह पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उत्सव मनाया जाएगा. It will be a time for celebration for the whole of India. What do you expect in your heart? I would like your personal view. What do you expect to happen to India after the inauguration of the Ram temple? What do you think will happen? Sir, in total, in spirit, the citizens, the voters, and the Hindu sect of people feel that they have got their rightful right back. This aggression, what had happened for 500-600 years, the Mughals and the British and later the Congress left these people deprived, have got their pride and their respect back. They see this Ram Mandir coming up not as a place of worship, but as their respect and their pride, which was crushed over this 600-700 years by various regime of people coming. I feel it is sense of respect that we have regained in the setting up of this mandir and setting up of the Ram Lala, sir. That's what I feel. Every Indian feels they have regained their respect back. And that is number one. And apart from that, there will be crores upon crores of tourists, pilgrims will be coming in from all over the world to visit Ayodhya and all the other sites associated. So can you give us a number? I don't know whether you've calculated it or not. Can you give us a number? No, sir. On how much do you expect? How much foreign exchange do you expect this country will earn? No, sir, no. Just talking vaguely, all these figures and all I've not worked upon. Let the railway station, the airports, the connectivity, the Uttar Pradesh corridor, the Bombay-Delhi highway, there are lots of things that are connected. But you can see the mass transport, the movement of people. And as a pilgrim, sir, we see 40 to 50 lakh pilgrims in Hajj. I think in India, with a population of 142 crores, if we have a footfall of at least
20 to 15 crore people in a year at Ayodhya, I would not be surprised, sir. That's right, which is going to be absolutely fantastic. So, which means we are looking at somewhere around 1,000 crores earned just from pilgrims going to Ayodhya and all related sites, which is fantastic. And great for Yes, sir. great for Because- Uttar Pradesh, by the way. Fantastic for Uttar Pradesh. The 100%. and the Where kind Uttar of Pradesh pilgrimage has come centers from, that are sir. already there in Uttar Pradesh, it is going to transform the entire state. That will be fantastic. So I hope people are working towards it. The Prime Minister said he was. प्रधानमंत्री जी ने कृष्ण जन्मस्थान में जाकर के ये बोला कि अब देखिए आई विल ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ ब्रिजभूमि. ब्रिजभूमि यानी श्री कृष्ण की भूमि, श्री कृष्ण और राधा जी की Yes, भूमि. yes, He is going to yes, bring it yes, back. the oldest known city in history, sir. That's what he said. The oldest known city in history is Kashi, sir, not Mathura. Yeah. Mathura. I'm talking about Mathura. When he visited Mathura, he was the first Prime Minister to visit the Krishna Janmasthan temple. He Yes. said that he is going to bring back the lost glory of the Brajbhumi. So, we are looking at Krishna Janmasthan. Ram Mandir is already done. We are looking at Kashi Vishwanath. That itself, I think, is enough for a place in history, magnificent place in history for Mr. Narendra Modi. What do you think? Yes, sir. मोदी की गारंटी का तो कोई डाउट ही नहीं है, सर. मोदी की गारंटी यानी गारंटी देने वाली न गाड़ी जो चल रहा है, विकसित यात्रा व्हीकल्स, भारत विकसित यात्रा, जो विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा इज फैंटास्टिक. बोले कि देयर इज नो मिडलमैन इन्वॉल्वड. नरेंद्र मोदी जी सेज देयर इज नो मिडलमैन वेयर आई एंड द पीपल आर कंसर्न्ड. In the earlier Congress regime, there was always a middleman to get the government benefits. He says, my Viksit, even if you have not got it now, my Viksit गाड़ी, जो गाड़ी आ रहा है, guarantee देने वाले गाड़ी, हर village पहुंच रहे, every village is reaching. So, why did he stress, Darwala Saab, that middlemen are eliminated? The Prime Minister and the people directly, all the benefits straight to the people, no middlemen involved. Earlier Congress regime was full of middlemen. Rajiv Gandhi used to say, 100 रुपया मैं देता हूं तो 90 रुपया बीच में खो जाता है. Wow, this big change, is it digital revolution the only thing or the entire exercise that you're following, Darwara sir? Sir, it is that the imandari, sir. The Prime Minister says he works only and only for the have-nots, and the have-nots, if are not going to get transferred, getting their benefits into the accounts, it is purpose. There is no purpose in his life. This man's purpose in life is to bring the nation in the forefront, and whatever it may come, as he said, I will bring in no matter how many offices are required. But ये देश का एक सपना है, विकसित भारत. ये देश को एक अलग लेवल पे लेके जाने का हम लोग देख रहे हैं. एंड 2047 मोदी जी वहां पर जब भी नहीं रहेंगे, but the standards that he is going to leave for the coming generation to work will really be remarkable, and that is what he is aiming at, sir. And this is the standard set by the Honorable Prime Minister, sir. I hope it continues. I hope to 100%, sir. I Yes, sir. hope after Mr. Modi comes back, as you said, is baar 500 par. I hope Mr. Modi, when he returns in 2024, we'll have a quantum jump in development, a overall development and holistic development, where we will not only talk about GDP, we'll also talk about per capita income, sir. Rajiv sir, Pradeep sir, I'd like to set the record right. As you said, Modi ji, when he is going to leave the legacy, the selection of people over here is totally वंशवाद के लोग नहीं, जो डिलीवर करने वाले हैं, जो आपके मेरे प्रदीप सर जैसे जो ये देश के लिए जो तड़प रखते हैं, जो कुछ कर गुजरने की यहाँ पर सपना रखते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर हैंड पिक करके they are going to be given the slot, and that is what you have seen in the 3 states, and that is what is going to happen in 2024. Your legacy, your money, or no matter where you come from, if you have not delivered and if the Aam Janta is not happy with you, you will be asked to leave. Because when Modi ji goes, he will make sure he leaves this country in very safe, stern and firm hands. Fantastic. Fantastic. Absolutely fantastic. Darwala sir, thank you very much for joining us. Great pleasure to have you here as always. And Thank you, Rajiv sir. Thank you, Pradeep sir. Frank talk. And a very, very happy new year to you. Same to you, Rajiv sir. Pradeep sir, enjoy yourself. But before you go, just one last question. Do you Sir. think Uddhav Thackeray ji will rejoin the alliance with the BJP before 22nd January or after 22nd January?
So definitely no speculation, but as you say, it is the natural alliance between Uddhavji and Bharatiya Janata Party. He has been really misguided by the old fox. He really needs to wake up because Uddhavji coming with us is nothing less than a dream. I personally feel Uddhavji is stalwart, and without him we are incomplete. And if Uddhavji joins, sir, Maharashtra to fir the slang language, Maharashtra to fir khalas. राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिव, जय भवानी, जय वंदे शिवाजी। मातरम, जय सिया राम। Well, I hope it happens. Yes, sir. Because really speaking, Uddhav Thackeray at the moment is kind of lost. Laga Saray. He doesn't know where he should be. I'm not sure whether he's happy at all or not. Exactly, sir. Or maybe he is happy, one never knows. Because I haven't met him now for some time. So, right now, at the moment with us from the NCP, we have Dr. Surena Malhotra. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Good evening. Namaskar, namaskar. Namaskar. Compliments of the season and Same to Happy you, ma'am. New Year in advance to you. and all Very, very the- happy New Year, ma'am. Very, very, very happy New Year. Wish you the same. नए साल की मुबारकबाद हो। नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लाए, Thank you. आपको विजय श्री प्राप्त हो हर शत्रु के ऊपर, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। Thank you so much. तो डॉक्टर मल्होत्रा, शरद जी। पवार साहब ने ये कहा कि भाई इतना ज़्यादा वक्त राम मंदिर के ऊपर आप जो लगा रहे हैं, आप ज़रा अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, ये सब बनाइए, ये प्रधानमंत्री का सही काम बात नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं होता। मंदिर जो होते हैं वो मंदिरों के जो प्रतिष्ठान होते हैं वो बनाते हैं, मैनेजिंग कमेटी बनाती है, और पुजारियों का काम होता है। प्रधानमंत्रियों का काम होता है देश चलाना। सही बात है। So what do you think? How will this statement go down with the public? जरा बताएं। See, basically we are all happy that राम मंदिर हो रहा है। जी। I mean, अब सब लोग भाविक है, हम लोग भी श्री राम को मानते हैं, सभी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। But it is a very nice thing. But as the thing is that राम मंदिर बनाने में जितना एफर्ट्स लग रहे हैं, जितने फास्ट उन्होंने जो राम मंदिर बना के दिखाने की कोशिश की है, आई वुड अप्रिशिएट इफ ऑनरेबल PM मोदी जी गिव्स दैट मच टाइम टू एटलीस्ट। नाउ द कोरोना स्टार्ट हो रहा है, तो कोरोना की इतनी प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस ये जो सतर्कता फास्टनेस ही शोइंग इन द अदर थिंग्स, दे शुड बी शोन आल्सो इन ऑल द थिंग्स। Now, so fast Ram Mandir is being made. Why wasn't some fast decisions taken for Manipur? Wasn't it? I mean, वहाँ इतना लेट कुछ डिसीजन ही नहीं हुआ, कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। तो अच्छी बात है कि राम मंदिर हो रहा है, इसके बारे में तो हम दो राय नहीं है। बट राज्य में, इंडिया में कितनी सारी जरूरतें हैं जिसके लिए भी फास्ट एक्शन बहुत सारा रिक्वायर्ड है। अभी देखते देखते कोरोना इतना फैलने लगा है, हजारों के ऊपर लोगों को कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यू नेवर नो व्हाट टर्न इट दैट इज गोइंग टू टेक। तो उसके लिए भी तो फास्ट एक्शन होनी ही चाहिए कि नहीं? कुछ मौत भी हो रही है, तो प्रायोरिटीज जो है वो भी यू हैव टू गिव प्रायोरिटीज टू एवरीथिंग। Absolutely, Pradeep ji. Surena Malhotra ji, the point is, it seems that India Alliance is trying to, the BJP is propagating it that you are trying to move out of this Ram Mandir celebrations. You don't want to be a part of it because Pawar Sahab ne kaha ki you're putting too much efforts and time onto that because you don't have anything else to show. Mamta Didi says that I'm not going to attend it. Uddhav Thackeray ji says, I will not attend on 22nd, even if I'm invited. I will not. Sanjay Raut says that he will visit after 22nd. You have various other ways where Stalin is concerned or other people are concerned. प्रियंक खरगे सिंह, राम मंदिर तो आपने बांध दिया, मगर राम राज्य कभी आएगा? राम राज्य कहाँ है? आपने जो वादे किए वो पूरा नहीं किया। And then Sam Pitroda saying again that Prime Minister Modi is devoting too much time. So, is that the India Alliance taken this decision objectively together that we are not going to be part of the celebrations? Dr. Malhotra. See, this is very obvious to everybody
that Ram Mandir, the timing of it, the efforts put in over there, this is all, linking to all the elections which are going to come up. So they are trying to use people's sentiment, people's religious sentiments to get mileage. So it is very obvious to everybody. And all the parties who are together, they all know all this about. See, it is like somebody will say कि okay, राम मंदिर, राम के दर्शन तो सभी को करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बट वो अपने हिसाब से अपने टाइम से वहां पे जाएंगे, वहां पे प्रे करेंगे जिनको प्रे करना है. तो बट द वे इट इज बीइंग डन, द टाइमिंग एंड ऑल, इट इज वेरी, उसको पॉलिटिसाइज किए, मतलब किया है. So this is being all done just for getting more mileage. They are promising all the people that some people will be selected and then they'll be taken over there. They'll be, the darshan के लिए उनको priority दिएंगे वगैरह. So these are some election tactics only. So many people have realized all this. And definitely there are much more important things nowadays which is most required. Now over here Uddhav ji said, Uddhav Thackeray साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्री राम की ठेकेदार नहीं है. Exactly. हम लोग जरूर जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए. आखिरकार बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने में सबसे बड़ा हाथ शिव सैनिकों का था, एज एडमिटेड बाय बीजेपी इटसेल्फ. बीजेपी की खुद की स्टेटमेंट आई थी कि शिव सैनिकों का काम है, हमारा काम नहीं है. तो और अभी तक तो उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण भी नहीं आया है. बट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट ही सेइंग कि राम मंदिर ये क्या किसी एक पार्टी का, एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज एवरीबॉडीज, इट इज ओपन फॉर ऑल. तो वहां कभी जाना है, कभी दर्शन लेना है, जाना है कि नहीं जाना है, कि अपने घर से ही प्रे करना है, सो दिस इज ऑल लोगों का अपना खुद का डिसीजन है. मगर ये इतना बड़ा इवेंट करके, इवेंट मैनेजमेंट इज बीजेपी इज tries to do the best in event management, but what about the management of the people? What about the management of the people's lives? What about the management of the poor people? What about the job? What about the unemployment? What about Maharashtra की जो स्थिति जैसे लोअर जा रही है? What about Mumbai? What about all these things? They have to give reply to all that. नहीं, वो रिप्लाई नहीं देते साहब. My simple question was, राम मंदिर बनाने में इतना फास्ट उन्होंने काम कर दिया, इतना जो भी मैनेजमेंट करके बना दिया, मणिपुर के मामले में क्यों नहीं इतने फास्ट, मतलब why didn't they take action so fast? लेकिन मणिपुर के मामले में मैडम, मणिपुर के मामले में weren't the ladies important? मणिपुर के मामले में तो प्रधानमंत्री जी खुद नहीं गए. हाँ. और राहुल गांधी जी जा रहे हैं. 14 जनवरी को राहुल गांधी होंगे एक बार फिर मणिपुर में होंगे. Exactly. So that sentimental things, it is the real sentiments have to be seen, and I hope people see through all this. I hope people realize that what is the showmanship and what is the real affection for people. I hope people realize the difference. Do you think people will see through this, in your opinion? Many people are already seeing through this. There are, it's going to take time. Some people are going to be, as they said, they are playing very this thing on the sentiments, for people's sentiments. But people have to realize one thing, that Ram Mandir is everybody's. It is not a BJP thing. BJP might have done the work and whatever that, and Ram is everywhere. Ram is not there only in the Mandir. Ram is everywhere, and everybody believes in it. Everybody is in everybody's heart. And I would also say कि भगवान राम जी would want that people का, लोगों का उद्धार होए. वो भी चाहते होंगे कि लोगों के जो प्रश्न हैं उसके लिए लोग आगे आए, उसके लिए नेता लोग आगे आए, लोगों के प्रश्न मतलब उसके लिए कुछ वर्क करे. जी दुरुस्त बात. जी डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, सुप्रिया सुले जी is leading the Kisan Akrosh Morcha. Kisan Akrosh, she believes that injustice has been done to where the farmers are concerned. This government is not concerned about the farmers. That was, even Sharad Pawar Sahab said that, and Sharad Pawar Sahab also was a part of the onion farmers agitation, where he said the government should stop this ban on exports. And abhi dushkal hai, avkal hai, farmers have been suffering. Second thing, the most important thing is, Supriya Sule said she will not come to Mumbai till October 2024. Now, what तरह का speculation चल गए कि Supriya Sule is scared that Ajit Pawar ji is very dominant in Baramati, and Ajit Pawar ji will be fielding a candidate, and she'll find it difficult, so she wants to stay back in Baramati and expand her contacts and her voter base there. How do you see this?
Is it is not that. It is that they want to be there for the people, the way they are now over there for the farmers. Now this question, Amol Koleji and Supriya Sule Taiji, she had taken in the Sansad maybe. But what happened? उनको निलंबित किया गया because उन्होंने अनियन एक्सपोर्ट के बारे में, बैन के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहा. तो इसके लिए तो they are going to the ground level, they are being with the people, they are being with the farmers. और मतलब अनियन एक्सपोर्ट बैन एंड देन ऑल्सो उनको हमी भाव भी नहीं मिल रहा है प्रॉपर अनियंस को. नॉट ओनली अनियन, देयर इज ऑल्सो कॉटन में भी है प्रॉब्लम, सोयाबीन में प्रॉब्लम है. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग फॉर द फार्मर्स. लेकिन मैम ये यहाँ बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जितना महाराष्ट्र के किसानों को मिला है सरकार से वो किसी को नहीं मिला है. कहाँ मिला? इतना मिला होगा तो इतने मिले होंगे तो व्हाई वुड दे बी सो मेनी सुसाइड्स? क्यों होगा जी? उनको लोन मुक्त में भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया. इतने आक्रोश इसके लिए so many farmers are coming there, so many are joining this rally. Why would they do that if they were so happy about it? Dr. Surena Malhotra, can I request you for something? Yes. Please, I hope you won't say no. Yes, Sylvie. किसानों, अगर आप अभी किसानों को एड्रेस कर रहे होते महाराष्ट्र के किसान अगर आपके सामने हैं, सुप्रिया सुले जी के बारे में आपको उनको कोई मैसेज देना है तो आप उनको क्या बोलते हैं मराठी में? जरा मराठी में बोलिए ना. मराठीमध्ये एकच मेसेज आम्ही देणार जे शेतकऱ्यांना की सुप्रिया सुले ताईजी स्वतः संसद रत्न आहे, स्वतः संसद रत्न आहे, प्लस शरद पवार साहेबांची मुलगी पण आहे. म्हणजे लहानपणापासून त्यांनी आपल्या वडिलांना बघितलेलं आहे की फार्मर्ससाठी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा जीव तुटलेला आहे. शेतकऱ्यांना एवढं पुढे आणण्यामध्ये त्यांचा एवढा मोठा हात आहे आणि तीच परंपरा सुप्रियाताई पण चालवत आहेत. आणि सुप्रियाताईंचं एक म्हणजे आहे की ते नेहमी म्हणजे कोणत्याही म्हणजे जनतेच्या प्रश्नाला वाचा देण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात. नेहमीच संसदेमध्ये पण सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारण्यामध्ये त्या सगळ्यात पुढे आहेत. आता तर त्यांना म्हणजे किती वेळा संसद रत्न, संसद महारत्न पण 2दा प्राप्त झालेला आहे. हे त्यांच्या एफर्ट्सनी झालेलं आहे. आणि त्या कधीही कोणी त्यांच्याकडे गेलं तरी त्यांचे प्रश्न कसे चांगल्या रीतीने आपण पुढे आणू शकतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न नेहमीच करतात आणि जेन्युइनली करतात. मी त्यांच्यासोबत किती वेळा काम केलेलं आहे, मी बघितले आहे. आणि यु नो त्यांची कॅपेबिलिटी आहे की त्या सगळ्या प्रश्नाला सायंटिफिकपणे किंवा खऱ्या म्हणजे ग्राउंड लेवलला जाऊन त्या सगळ्या प्रश्न अंडरस्टँड करून जेन्युइनली लोकांसाठी काम करण्याचा प्रयत्न करतात. नुसतं उगाच सांगत नाही की इव्हेंट कधीही करत नाहीत ताई. ताई कधीही इव्हेंट करत नाही. आणि म्हणजे ताईंसारखं लीडर कोणाबरोबर असलं तर फारच चांगले आहे ते लोकांसाठी. अभी सुप्रिया सुले जी जो किसान आक्रोश मोर्चा, Dr. Malhotra, she is taking it, and it's very, very essential that you rally the cause of the farmers because they expect that after January 2024, 26 jillas in Maharashtra are probably going to have problems of absolute no water. Dushkal ka ek bahut bada ek serious threat is looming over the farmers of Maharashtra, and it's going to affect 26 jillas. Now that's a huge kind of problem that this government is going to face, and Supriya Sule is coming in the right direction, taking out. Now, do you think this triple engine Sarkar is totally geared up to meet these challenges of Dushkal, no water in 26 districts and after January 2024? Where are they giving time for the people's problems? Where are they giving time to understand people's problems? They are going all the time to Delhi to solve all the political other issues. You know, किसको ये पोस्ट देना है, कैसे दूसरे पार्टी को तोड़ना है, बस इसी चीज में उनका मतलब ध्यान रहता है. तो ये लोगों के प्रॉब्लम कहाँ वो सोचते हैं. पानी की तो बहुत समस्या आने वाली है. पानी की जो पशु है उधर, जो जानवर होते हैं खेती के लिए, जो जानवर होते हैं उनके पानी की प्रॉब्लम आएगी, लोगों के पानी की प्रॉब्लम आएगी. तो कैसे मतलब कैसे सरवाइव करेंगे. तो ये अभी से सोचना चाहिए. और कहाँ इनको टाइम ही नहीं है. कहाँ कुछ किसी भी मुद्दे में वो डीपली जा रहे हैं. मुझे तो कुछ दिखता नहीं है कि कुछ ठोस निर्णय किसी भी तरीके में कुछ ले रहे. डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी, आरक्षण में कुछ किया, कुछ भी किया नहीं है. बस आरक्षण की बात अभी करते हैं. प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा ड्राउट को लेकर के, सूखे को लेकर के, अकाल को लेकर के, बहुत संगीन समस्या है. एंड आप व्यूअर्स मस्ट अंडरस्टैंड, मराठवाड़ा में एक वक्त था
कि ट्यूबवेल का जो पानी है आपको अंडरग्राउंड वाटर मैक्सिमम 5 मीटर या 10 मीटर पे मिल जाता था। मैम आज की तारीख में हालत यह है 400 मीटर पे नहीं मिल रहा है। Yes, 400 मीटर के डेप्थ पे भी खारा पानी आ रहा है, ब्रैकिश वाटर इज कमिंग आउट, देयर इज नो वाटर। वी हैव डिस्ट्रॉयड द अंडरग्राउंड एक्वीफर्स which recharge all the rivers on top because of too many tubewells yes. and because of the cropping pattern। आपने मराठवाड़ा में सूखा है, वहां पर सोयाबीन लगाइए, बाजरा लगाइए, दाल लगाइए, सब कुछ लगाइए। अब वहां के क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया गया, ये कह दिया गया कि भैया आप शुगर केन लगाओ। You know how much of water sugar cane requires so much of water. That's right. I mean, that is obvious. Everybody knows that. Even a school child would know that. That's right. But very unfortunately, when our very dear friend Mr. Fadnavis was the chief minister, nothing was done over there because the monsoon was very good. क्योंकि monsoon बड़ी अच्छी थी, आपने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया। Change कर दिया। See, that is what does ki doing farmers work, looking after farmers' interests requires that intelligence, requires the deep study, which Pawar Sahib had when he did so much of studies in the on this cropping pattern. There that as everybody said ki whenever he used to touch the ground, he would know ki what would be coming out well in that particular. This is what Mr. Modi said. The Modi said, and then later on he changed his tactics. He was telling the truth at that time. उस वक्त सच बोल रहे थे। Yeah, anything is successful when you think about it scientifically, study it properly, brings all the newness in that. Like Pawar Sahib, he brought all the so many new technologies in farming, and new seeds. Helped Maharashtra farmers so much. And new seeds. Yeah, and new seeds. That's right. Everything. I mean, even seeds were given, the manure was given, proper manure was given. The people, the students were educated in a farming line very properly, and so much of everything was increased, and so many facilities were given. That is the way a thing should be done properly. See, now even at our place, the corona was stopping the spread was important, and that was successful because it was thought about scientifically. Now I don't know what is going to happen. As doctors, we are truly scared what will happen if corona turns worse. So obviously, because Pradeep ji, this is very important. What Dr. Surena Malhotra said. Because the MBA government was so successful in stopping the spread of corona. Yes. The Supreme Court appreciated the efforts of the Maharashtra government. The standing committee or the managing committee, the special committee which had been formed, or the special team on COVID which had been formed by the centre, headed by Dr. K.K. Paul, also praised Maharashtra for their efforts in stopping COVID. Dharavi pattern was perhaps now this government will start to do something new, and God knows what is going to happen. God knows. We are really scared what is going to happen. Really, truly. I mean, I would appeal to all the people that what had happened last time. Please start taking care of yourself. Please start wearing masks. Please, be careful. और कल तो न्यू ईयर है मैडम, कल तो न्यू ईयर है, लाखों की भीड़ होगी हर जगह पे। I know. Truly. I mean, people have to now look after themselves. And they have to wear a mask. Wherever you go to a crowded place, wear a mask. Wherever, yes. Right. And mask would be definitely helpful even in the pollution, which we are facing so much, which is not improving in any way. I wanted to ask you, Supriya Sule ji informed everybody today that, I had a choice. I had a choice to be with the powers that are ruling the state, ruling the country. I had the choice. I had the choice of enjoying all the political benefits, siding up with them. But I choose to be with my father. I just kicked off all these kinds of offers that was pouring into me, and I stood by my father. I am with him. I'm fighting with him. Win or lose or whatever happens, I am with my father. And that, now how do you see this kind of leadership? Supriya Sule ji is displaying exemplary quality of leadership. How do you define this kind of leadership? This Dr. is a great leadership. In fact, Pawar Sahib, they motivate us so much that even we don't think that, we go there, we'll get some perks, it'll be easy for us, we won't have to face the struggle. But no, they stand so firm that we also feel like, being with them.
because their thought process, their way of thinking, everything is so nice, so good. So we can't really, we have to, it's like our inner compulsion that we are with them. We have to be with them. We have to be with the people who have such great thoughts for the people of the country, and they want to bring the country forward, and we have seen them working. They work for the people. Pawar Sahib is always working for the people, and now Supriyata is also showing a great leadership. We are all with her. Whoever is now with the But politically, how are you going to work it out, Dr. Malhotra? Because what happened, Sharad Pawar Sahib recommended that Bahujan Samaj, this AB, Prakash Ambedkar ji joined the MVA. And in fact, he put in a word to Mallikarjun Kharge also that Mr. Prakash Ambedkar's party should be, VVA should be a part of our alliance in Maharashtra. But Prakash Ambedkar ji says, I want 12 seats. 12 seats. He says, I want 12 seats, nothing less than 12. And then you have Sanjay Nirupam versus Sanjay Raut. Sanjay Raut says, I want 23 seats. The Uddhav Balasaheb Thackeray, Prakash Ambedkar's formula of 12, 12, 12, 12, 12 to all. Yes, 12 to all. 12 to all. And they have to sit, all the leaders at the top level, they have to sit down and work it out. And I'm sure they will work out something. I mean, everybody wants to ultimately, they know they have to come together if they want to see a change. That's right. And it has to be a change. But ma'am, now you were talking about something when I stopped you. I'm so sorry. Yes. I Sorry. usually don't. No. Because we were talking about a very important subject that Pradeep ji had raised with regard to the drought situation in 26 districts. 26 district में साहब drought situation है. People are underestimating it. लोगों को मालूम नहीं है क्या होने वाला है. क्योंकि जनवरी, फरवरी में क्या और उसके बाद रबी सीजन में जो हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल में, उसके लिए बुआई नहीं हुई है मैम. अक्टूबर नवंबर में जो बुआई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. द सोइंग हैज बीन लेस बाय अबाउट 40%. So which means your yield will be less by about 40%. But then that will be a very long show. Let's not go there. You were about to talk about something to do with the Maratha reservation. अब मराठा रिजर्वेशन के लिए नई डेट दे दी गई है कि फरवरी में एक स्पेशल सेशन करेंगे. लेकिन असेंबली का इसमें है क्या? It has to be done by parliament. What can the assembly do? Exactly what it is, just they are trying to push it ahead, push ahead. बस इनको ऐसे ही ना एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ. Now Dhangar is also coming and everybody wants to, and I mean both the red and the yellow color coming together in Mumbai at one time. It's अब वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी को बहुत बड़ा एक रैली करने वाले हैं. बहुत बड़ा रैली आने वाली है. So many tractors are going to come and so many people are going to come. I don't know how these people are going to manage the government. तो मैम इनको मालूम नहीं है क्या कि देखिए साहब हर जगह पे पढ़े लिखे लोग हैं. मतलब वो कोई गंवार लोग तो नहीं है ना, पागल लोग तो नहीं है. एक चीज मालूम है उनको. That Manoj Jarange Patil is very well aware of everything. He knows all the laws. He has done a deep study of everything. All the people around him, all his advisors, they are really very well read and they are fantastic guys. Look at their organization. Look at the manner in which they've been organizing rallies and things like that. So the government today, do they think they can get away with this? Exactly. They don't appear to be serious at all about the whole thing. They just, the CM साहब ने जो भाषण दिया था, जो आपने सुना था, जब भी उनको डेट मतलब बता रहा था कि how we are so serious about it and all, it was such a lengthy speech. But what was the net result? It was just क्या बोलते ना मराठी मध्ये गाजर दाखवलं गेलं, just showing a गाजर कि हाँ बाबा आम्ही एवढे सिरियस आहोत, आम्ही हे आहोत. अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाई उन्होंने. Such a big speech, and what was the, in short, what was it? Nothing. It was just like telling, oh, we are so much concerned, but what have we done? We are not nothing. But he can do nothing. Let's be very clear. Exactly. Because February के आसपास, ma'am, the electoral code of conduct will come into play. Code of conduct, exactly. सब लोग तो वही बोले कि उसी time की what is he saying? It's going to be a big struggle. So why don't they listen? One second. Why don't they listen to Sharad Pawar? I don't understand. अगर कोई शख्स आपको अच्छी सलाह दे रहा है, Sharad Pawar साहब is the tallest and the senior most leader, active leader today in the country. पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में. अगर वो आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उसको सुन क्यों नहीं रहे? उन्होंने Sharad Pawar was the first person actually to say, don't make promises you can't keep. Yes, exactly. Because they can't. It's not in their hand actually. I mean, it has to be,
the legalities have to come in, and then that has to be thought about and how to go about it. Mr. Sharad Pawar must have said God knows how many times, hey listen, the case is pending in the Supreme Court. Exactly. आपने curative petition फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा the amendment to section the amendment 102B, it has to be brought in by parliament, it is not in the hands of the assembly. ये सब चीजें इनको मतलब उस वक्त डिस्कस करनी चाहिए थी ना. So why didn't they do it? सबके सामने पवार साहब का बात मानना, it is like agreeing with the opposition, ये भी होता है ना, like they think that they know the best. But they're going to lose, ma'am. Yeah. Because all the Marathas are going to say we have been cheated. Yes, exactly. You know what? This is what happens when there is triple engine. You know, the differences in the thoughts. You know how Chhagan Bhujbal ji taking a different line, having a fourth engine. Adding a fourth engine. So all जी. these things keep on. और कभी-कभी डीजल इंजन में पेट्रोल डल जाता है तो उसके बाद क्या होता है दिखता है. जी प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज. No, here, one way Devendra Fadnavis is accusing Sharad Pawar ji. He says Sharad Pawar ji is responsible. He has always been anti-Maratha. And See, when they don't have anything to say, this is what they will keep on saying. This is the same thing what they said कि पवार साहब and farmers के लिए बोलते हैं. So whenever they face such a situation, they blame. That's always the blame game. When they cannot really argue anything much, how can Pawar Sahib be anti-Maratha? How can Pawar Sahib be not good with the farmers? That means he's anti These himself. are the things. If he's anti-Maratha, he's anti himself. Now people have started understanding the game. What Fadnavis and everybody was saying that if he believes that now we should do, or if the party believes that we should do, if Supriya Thai believes that we should do, then why didn't they do it for 27 years? When Pawar Sahib was in power in Congress here. I mean, that's what Fadnavis ji is trying to say, and probably even recently Mrs. Raj Thackeray also talked about the same things. If they wanted to do it, why didn't they do it then? All kind of... These are political talks. Whenever somebody is criticized more, they should know that that person is in fact done good for the particular cause. But there is one thing which is very intriguing, ma'am, in this entire thing. जो प्रदीप जी ने बोला अभी वो सोचने लायक है. बाबा अजीत दादा पवार इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल चुप हैं. Why is that? I suppose he's understanding the situation better. In the whole lot of them, he's understanding the situation better. कि बाबा what can it be done? What can be done? So is as a New Year gift, is Ajit Dada Pawar coming back to Sharad Pawar sahab? मतलब are they going to come back together? NCP I don't think so. I don't think so, but we are the kind, we don't know. I don't think so. I don't think. Recently Ajit Pawar said that मैंने बंड अता खेला भी. I did whatever I did was at the age of 60, but somebody has done. I took 40 MLAs at the age of 60 and moved on, broke the party and moved the other side. But somebody did it at the age of 38. He was trying to point figures at Sharad Pawar ji. Yes, perhaps Sharad Pawar ji. But at that time there were different situations, and Pawar Sahib started his own party, different party. So why they should also do that? They should also get a different chinna. Why fight for the if they have the guts, they have different things. Totally. Pawar Sahib stood on his own. He started whatever he brought Nationalist Congress Party up. So he did everything on his own. That's right. Now the two situations are not really comparable, so to speak. And at that time there was no ED and there was no CBI and there was no income tax. Exactly. At that time, going after him. I think Sharad Pawar Sahib gave a clarification that it was not a rebellion; it was a mutual consent. It was a mutual consent. Yes. It was a mutual consent. Absolutely. And then after that he re-merged with the Congress. He dissolved Congress S, came back and re-merged with the Congress, and then left again over the issue of leadership when they wanted to make Sonia Gandhi ji the Prime Minister of the country. That was way back in 1999. And amazingly enough, even in 1999, the NCP got more seats than the Congress in Maharashtra, which is fantastic. Absolutely fantastic. So what do you think will happen now when we go to polls? What do you think will happen now, ma'am? See, definitely NCP will, NCP, the main NCP, there's no other NCP. At the moment there is no other NCP, there's only one NCP. Our NCP. Yes. So, definitely Pawar Sahib will, because of these farmers issues and lot of other issues, and people really, having faith in Pawar Sahib, that Pawar Sahib, when he comes in power,
they will definitely do something for the people, something for the farmers, something for the unemployment. The basic needs of the people will be looked after by the Mahavikas Aghadi. This is a faith that their people are showing in them. People are showing in Pawar Sahib, people are showing in even Uddhav Thackeray also to such an extent. A lot of people are showing faith with them. So I think all of them will come together and really look after the people. People are deprived of their rights, you know. People are just like living an eventful, you know, just an eventful life now, just looking at the events of BJP, Gee. but not the real people looking after them. So they really want that. People are not happy. People, even in Mumbai, I'm talking to people now, their whole thinking has changed. So many people who were staunch BJP followers have come to me and said that, okay, we may not say things openly, but we are not happy. Even the elite class of people, they say, okay, we are not happy. We see what are these are false promises. Vikas, Vikas आएगा कहाँ आया कुछ नहीं हुआ. Nothing has been done in the past few years. No progress really. Maybe few big things have happened, but what about all the people? People don't feel safe. People in Mumbai, they feel left out. So many good projects are now going to Gujarat. Huh? What about that submarine project? Tourism. Tourism. That is also gone to Gujarat. From Sindhudurg, it went to Gujarat. Then what about this electric car? Elon Musk is going to bring that project. That is also being opened in Gujarat. And the diamond bourse has also shifted to Diamond Surat. bourse, that is already shifted. So as a result of which the diamond market over here, very close to our office, is half empty. Yeah, Is half empty. We were proud. And you got a bullet train to connect them to Surat. Huh? And right next to our office is the bullet train station coming up. Right here. And In there was so BKC. much of congestion, you know, from Bandra West to go to BKC is such a, we have to think about it. It's as though we have to go to town, you know. Now presently the situation, the BMC officers are just not looking after the roads. The roads are bad, the pollution is bad. Really, Mumbai is suffering a lot. Mumbai, I mean, when some other, our guests come from abroad, we have to say, oh, please don't look this side, please don't look that side. This is good, this is a nice thing, you know. So it's like, घर में कभी कोई लोग आते हैं और हमारे घर में कुछ चीजें रखी होती है तो हम लोग कैसे पर्दा डाल देते हैं फटाफट. So उस type का, that's what we have to do in Mumbai nowadays, you know. So Praful Patel book that he was going to write exposing Sharad Pawar ji. Sharad Pawar ji said, I'm eagerly waiting to see the launch of the book. You have any inclination when it's going to come out? Kuch information? I think. I don't know. That's what just said, and I don't know what is further going. It was just, things hurled. I hope whatever Praful Patel writes will be the truth. I hope he should write. I hope he'll have the courage to tell the truth. He'll have the courage to say that it was because of Pawar Sahib that I got so many chances. I got so much of, advantages in my life. My life was made because of Pawar Sahib. Yes, he should say that. He should say that. Well, we have been witness, at least I have been witness to a lot of things with regard to between Mr. Praful Patel and Sharad Pawar Sahib, where Sharad Pawar has actually saved Mr. Praful Patel so many times. So many times. I hope he will tell the truth. Because if he doesn't, people like us will. It is not as if there's going to be only one version to the entire story. Yes, very true. In any event, thank you very much. Thank you. सुनैना मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, ma'am. धन्यवाद. और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. I hope the new year will be better. I hope 2024 will be far better than 2023. I hope all of us will have at least health and happiness, if nothing else. Health, happiness and stability. And stability, and Political we already have the Ram Mandir. So, Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Namaskar. Namaskar. So, right, that's just about it for tonight's show. Mr. Yogesh Chile, for some reason or the other, I think he must be preparing for his New Year festivities tomorrow, so he's not picking up his phone. He usually doesn't do that, but must be really and truly very, very busy, or must be in an area where there is no phone. We'll meet you all in the new year. आप सब लोगों को नेशन नाउ की पूरी टीम से
एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। आपको मुबारकबाद। 2024 को सिर्फ एक और दिन बचा है। Let the New Year resolution be that there should be peace and happiness and prosperity everywhere. मैं अपनी तरफ से एक चीज, छोटी सी चीज बोलता हूं प्रदीप जी, कि हर दिन आप न्यू ईयर समझें, हर दिन दिवाली समझिए, हर दिन आप किसी ना किसी गरीब की मदद करें, छोटी सी भी मदद करें, 2 रुपए भी दे दें किसी को, कुछ भी कर दें। यू नो, इवन इफ यू नो कि कोई बेगर आ रहा है, कोई भीख मंगा आ रहा है, आपको मालूम है किसी गैंग का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसको कुछ दे दें। मैं आपको बता रहा हूं, द काइंड ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस यू विल फील इज समथिंग दैट you will not be able to express even in words. So help anyone, someone close to you. That's all that I can say. Would you like to say something, Pradeep? It's fantastic. It's a great exercise. It's Deepavali, as Prime Minister Modi himself said, when the New Year observes a fantastic event for the whole world and India also. But Ram Mandir Punarnirman, as Prime Minister said, is a big, huge event. 550 years. When Ram came back in Ramayana after 14 years Banvas, दिवाली तब मनाया था, आज भी दिवाली मनाते हैं, बट नाउ आफ्टर 550 years राम लल्ला is coming back. It's going to be a greater one of the, as the Vishwa Hindu Parishad says, अखंड ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्ग इसको बहुत बेताबी से देख रहा है, पाताल भी देख रहा है, बिल्कुल everybody and all three worlds. And Prime Minister Modi himself said that please 140 crore people, I request you, please आप अपने घर में ज्योति जलाए, राम ज्योति जलाए. Don't try to rush to Ayodhya, because I know everybody wants to come here. So the new year 2024 brings with us some things that landmark achievements. It is not only for Prime Minister Modi but for the entire country. Durust baat, absolutely true. And the Ram Mandir is done, and I am so happy about it, and I feel really great about it. आप सब लोगों को जय श्री राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सब लोगों को एक बार फिर health, wealth and prosperity to you. आप सब लोगों को एक बार फिर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, और जैसा कि अभी डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा के साथ हम लोग बात कर रहे थे, इफ यू आर गोइंग इन अ क्राउडेड प्लेस विच यू विल बी टुमारो, वेयर अ मास्क, नकाब पहनिए, बिकॉज देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ कोविड विच इज आउट एंड इट्स वेरी इंसीडियस, very insidious. It is not fatal, but it can weaken you. So be very careful, drive safely, get somebody else to drive for you, and don't drink and drive, whatever you do, and drink very sensibly if you have to. फिलहाल सारी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, जय सिया राम। जय सिया राम।